markets starting from tomorrow. A lot of people are expecting a bounce or a relief rally or whatever. But I am not from that camp that I expect a relief rally. The reason being, Reliance results were below expectation, and for sure it will be down by 100 rupees. So the question of Nifty bouncing and all that is stupidity. And Dalal Street is full of people, their dead bodies, who went to play for the bounce, who went to play for the relief rally. According to me, never play relief rally. Never expect it, never done it, never ever will do it. Because that is a short way of disaster. Now, coming back to the markets, first is Reliance. Secondly, this Axis Bank scam, mutual fund scam, that is, it's of big proportions. It's not restricted to Axis Bank. A lot of skeletons will come out of the cupboard. And the whole mutual fund industry as a whole will have a stigma. So I'm very sure tomorrow morning there will be withdrawals. So it might be 1 crore or 100 crores or 1,000 crores or 10,000 crores. There will be withdrawals and that will affect the sentiment. And the whole mutual fund industry is going to be really in a soup by this Axis Bank scam. Thirdly, our valuations are very sky high as of now also. I was looking at Titan. So it has a market cap of 196,000 crores. So almost 2 lakh crores. And it will earn 1,500 crores as net profit. So as you can do the math, it's at 130 PE, 130 PE. Whereas in US, a company called Tiffany, which is a world leader in this gold jewelry, and another one is Lee Van Cleef. So they are quoting at what? 20, 25p, and here we quote at 130p, which is absurd, unheard of, was okay. So here the valuations are high, very high. This Google is at 17p. Why the hell should Infosys and TCS quote at 34p? Why? LTI at 45p. Why? What is so special about us? One thing I forgot to mention. Anybody who thinks that the markets are bullish or will uh, have a new high, please excuse me, don't attend my spaces. As of now, I am very bearish and I will advocate bearishness till it lasts. Now, after this valuation game, just a moment. दीपक भाई स्पेसिस पे आइए ना स्पेसिस पे आइए या या So I was saying, who will buy your TCS and Infosys and banking? Now banking at 4p, 4 times book, 3 times book, it's unheard of.
AU Bank quoting at 1300. What for? What joy? All this is because of uh, mutual funds propping up the shares. Starting tomorrow, that will end. No one will be allowed to ramp up. No one will be allowed to check up the price. And fourthly, why will the foreigners buy over here? So, all in all, we are in a long haul of a bear market. It is a bear market starting from maybe 16th of October. It is a bear market. And another thing, in June, July, August, September, I don't remember which month. Every month, Nifty went up by 1,000 points. Okay. So, same way, in a falling market, Nifty will fall 2,000 points every month or 3,000 points because the speed on the downside is always faster. It's going to be a hell lot of a problem. My earnest request is if you can't short, at least sell a part of your holdings. You'll be better off. And this Axis Bank scam, I think tomorrow will be surprised by the markets, how they will react. Very funnily. And already the market cap has uh, come down to 252 trillion. Last I talked was at 269 trillion. So tomorrow we might see a 5-6 trillion gone another. So it's going to be very bad tomorrow. Now people who are expecting relief rally, this rally, stay away. And as usual, I would say don't play options. At best you can buy, but don't sell options. Nobody tells you that everybody is losing money in writing options. Nobody makes money. Those who say they make money are liars. And playing Nifty is another misnomer. Don't ever play Nifty or Bank Nifty. Just keep it simple. Buy what you want, sell what you want. Now I think I'll take a break and Vishal will speak something. Thank you, sir. Thank you. Good evening, everyone. First of all, wishing all the ladies a very happy Mother's Day. So, like Sharad sir rightly mentioned, don't do any sort of adventure of buying in the markets. The undertone is very bearish. There are a lot of factors which are coming into play. The inflation figures are pretty high. The Axis Bank scam, obviously, we don't know where this is gonna take the market. What kind of redemption pressures can come in if the panic sets in, and the DIAs and the retail investors start going ahead with the mutual fund redemptions. I think we are headed for a major disaster in the markets on the if you look at the data piece, Nifty has the highest cumulative highest open interest on 16,000 puts. So yesterday also I was in one of the spaces and people were wanted to try and play the bounce in the markets कि 16,200 16,290 के आसपास में बाजार आएगा वहां से they want to do an adventure of buying for 200 300 points. I mean, it's a adventure. If someone wants to do it, all the best and God bless them is all I can say. The sector, or when we talk about sectors, IT sector, Sharad sir has been very bearish for quite some time, and obviously IT sector is in a bad shape. The private banking, bank Nifty has been consistently being very weak.
the apart from it's more of a management which is happening. I mean, SBI, HDFC, ICICI, Axis, IndusInd Bank are correcting, and Kotak comes in for rescue. So don't look at the Bank Nifty as an index, but rather look at the stocks where we can clearly see enough and more bearishness coming into the banking sector as well. Metals, I mean, they have not been able to sustain on the higher side. The metal sector is consistently, there is a selling pressure on the higher side. So, I mean, I don't see any reality as a sector correction आ रहा है तो कोई I can't see any sector where there is any strength. तो फिर बाजार को लेके ऊपर कौन जाएगा? I don't understand. I mean, there could be technical bounces which will come in, but I believe that these technical bounces should be used to go short on the Nifty. I think, Sharad sir, that is it for now. We can talk on stock specific later on. Probably Abhishek ji can take it over, or sir. Yeah. Abhishek. हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। तो ये जो बिल्कुल सही बात बोली है शरद सर ने, जो मंदी दिख रही है वो स्टॉक्स में बहुत ही खतरनाक है कंपेयर टू योर इंडेक्स। इफ यू लुक एट स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस, जो 7,200 वाला 7,400 वाला अभी आ गया 6,000। एंड आई वुड नॉट से द मंदी इज ओवर रेट इन दैट, क्योंकि उसका फेयर वैल्यूएशन अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से 2,000 है। उससे ज़्यादा का उसको 1 रुपये देने का मतलब नहीं है। तो दैट इज हाउ द बिग मनी इज मेड इन द मार्केट्स। इफ यू रियली वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, यू गॉट टू सिट ऑन योर शॉर्ट्स। बाकी काफ़ी लोगों के पास हिम्मत नहीं होती पकड़ के रखने की। मोस्ट रिटेलर्स विल जस्ट थिंक चलो मैंने 1,000 पॉइंट पकड़ लिया, बहुत सारा हो गया तो मैं निकाल लेता हूँ। So that is the mindset which people are going on with. But then this market, the kind of valuations we are in, oversold can tend to get much more oversold. You cannot define oversold कि RSI पे 30 आ गया या 20 आ गया या जो भी है. But price action tells you much more than what the RSI can. Oversold can definitely get much more oversold. Look at something like a Mindtree or a Coforge. चलो अभी क्या हुआ था, थर्सडे के दिन थोड़ा सा पुल बैक आया था हमारे मिड कैप आईटी स्पेस में, या आईटी स्पेस में ही पुल बैक आ गया था बल्कि समझो, क्योंकि इन्फी वाज अप 3% ऑन थर्सडे एंड इन टाइम गॉट नेगेटेड ऑन द नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन जब वो एक्सिस बैंक का न्यूज़ आया। तो यू लुक एट व्हाट दिस होल्डिंग्स आर डूइंग। एक्सिस बैंक के जो मेन होल्डिंग्स है, एलटीटीएस है हुआ, एलटीआई हुआ, माइंट्री हुआ, आईटी स्पेस में ये सब, आई थिंक टाइटन आल्सो दे गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेक। सो ये है कि once they start liquidating their assets ना, कि अभी क्या हुआ, आई थिंक द फर्स्ट round of liquidation जो आया था on Friday, that was just other people selling, it was not their own fund selling. जब ओन फंड सेलिंग हो जाएगा तब तो और भी खतरनाक होने वाला है, बिकॉज they will not, they should not be able to sell ideally on that day when the news has come out in the market. तो either they have sold before or after, क्योंकि यहाँ स्पेकुलेशन का बेस बनता है. And then getting to another group of stocks, which is the biggest, the richest man in India as of now. वो वाले ग्रोथ स्टॉक की बात करते हैं. तो वो जो है वहाँ पे एक और कुछ न्यूज़ आने वाला है विच इज़ नॉट येट कंफर्म, रूमर्स है थोड़े से, वो आ गया तो फिर इसकी तो लगने वाली है, बैंड बजने वाली है जो वहाँ पे. तो न्यूज़ क्या है, आई शुड नॉट रियली रिवील इट, सो लेट मी कीप इट अ सीक्रेट एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो जब आएगा तब उसके बाद देख लेंगे. एंड देयर इज समथिंग गोना हिट द स्टॉर्म जो नहीं, खतरनाक. किसकी बात कर रहा है तो अभिषेक? हाँ सर, अदानी सर. अच्छा, वो तो जोक कर रहे हैं. नहीं सर, वो जो न्यूज़ आया है ना कि there is some kind of rumors going around the market. I do not know how true it is, but speculation के हिसाब से जो भी चल रहा है वो चल रहा है. You will obviously be aware of the news जो आने वाला है. It's about the FPI holding limit जो आने का कुछ है, but then let us not reveal it on public space. हाँ, तो वो चीज़ हुआ. And looking at the Nifty, जो तो Nifty, see there are three kinds of gaps. Okay, one is called breakaway gap, one is called continuation gap, and one is called exhaustion gap. ठीक है, breakaway gap क्या होता है कि जो अपने साथ 15,900 पे जो हुआ था, I think this must be somewhere around जून और जुलाई ऑफ लास्ट ईयर. तो वहाँ पे 15,900 के ऊपर ब्रेकआउट मार के उसके बाद 3,000 पॉइंट ऊपर चले गया मार्केट फ्रॉम देयर. ओके, दैट इज कॉल्ड योर ब्रेकअवे गैप. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जॉशन. ब्रेकअवे का मतलब क्या होता है कि beyond that it's gonna go much higher, and then there is no point of filling it. तो वो breakaway gap होता है. Then there is exhaustion gap and there is continuation gap. जो कल का gap था that looks more like a continuation gap rather than exhaustion gap.
people would look at it in a way of exhaustion gap, but वो exhaustion gap है नहीं, क्योंकि exhaustion gap होने के लिए जो है it had to give at least a bit of price action on the upside, जो बिल्कुल नहीं दिया है उसने. And if you look at the index components, कौन लेके जाने वाला है ऊपर? HDFC ट्विंस बोल के आप बोलोगे, बट वो तो वापस हर बार गैप डाउन मार के घुसते ही रहता है. तो आई थिंक दैट इज नॉट द आइडियल स्टॉक यू शुड बी लुकिंग एट. SBI है, चलो SBI कितना वेटेड है? कुछ नहीं वेटेड, 3-4% है निफ्टी में. बैंक निफ्टी में ही 6% है, निफ्टी में 3-4% होगा बस. वहाँ पे it would be foolish to look for a relief rally as of now. Even if there is relief rally, I would not be a participant on the relief rally at all. I would look for another opportunity to sell on the relief rally. ITC एक है which is looking extremely strong. जो मतलब जिसने जितना भी गाली दिया है पूरे बुल मार्केट में, वो पूरा गाली लेके अभी चल रहा है. वो ऐसा वैसे वाला हाल है उसका. But that is still again not a very big index component, तो उसका भी कुछ ज़्यादा weightage तो है नहीं. I don't think that also will be able to save the market as such, unless it goes up by 20% in a single day. There's no way it can save the market. So these were the thoughts upon, and just remember one thing: you don't try to catch a falling knife. That is one advice I would give to everyone. Chalo, thanks. Sir, continue. Kamal bhai, हाँ Kamal bhai, to हाँ शरद भाई. गुड इवनिंग शरद सर. गुड इवनिंग good. विशाल, समरत एंड अभिषेक भाई. निफ्टी का क्या है कि जैसा लास्ट वीक में जिस हिसाब से सेलिंग आया है निफ्टी में, आई डोंट थिंक सो दैट, आई मीन सेलिंग तो बहुत टाइम से आ रहा है, बट जिस फोर्स से गिरा है निफ्टी लास्ट वीक, मतलब इसमें ऐसा लगता नहीं है कि यू नो दे विल गिव अ चांस इवन टू एग्जिट एनीवन एनीमोर. एंड इवन अगर हल्का भी ऊपर आता है, आई मीन माय व्यू इज सिंपल दैट अगर इट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट ऊपर अगर 200 300 400 पॉइंट दिखता भी है गलती से इन इंट्राडे में, इट्स मच बेटर टू कीप अवे और जस्ट buy some puts or anything. It is not advisable to go long at any cost. I mean, till 17,000 के ऊपर तक जाए तो अब वो तो एक I think I don't believe that is going to happen in near term the way they have been pushing the market down. And every critical support has been taken off with volume on Thursday and on Fridays. So any pullback is going to be hammered very badly. And coming on to the stocks, I mean, as Abhishek Bhai bhi ne bataya ki about the Adani stock and everything, there is some rumors going on, and I think not. I mean, it's not advisable to buy. It's better to sit in cash for a longer time. बैंक में डाल दो, 4% मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया है. Instead of trying to get into the market and waiting for next 10 years for the prices to come up and then sell the stock. So I mean, I'm sounding very bearish, but the things are like that. Abhi. Neither the planetary positions are conducive, and neither is the markets the way the things have been sold out has been conducive for buying any stock. I mean, leave aside ITC or anything. Nothing is going to help the market for at least this month. जून का पता नहीं, जून आएगा, we'll see how the level comes in May next week or उसके next week. But at least till 2nd, 3rd June, I don't see any conducive buying coming in. I mean, I would be staying away from the market. हो गया sir, thank you. Samad bhai, Sir, good evening. good evening. Sir, I don't have any positions right now, but I feel I will be selling on rise. I will wait for the opening. Opening में if there is a dip, I will not sell. But मेरे को लगता है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, इंडेक्स को खींचेंगे, तो stocks will be hammered. यानी नॉन इंडेक्स स्टॉक्स लाइक अदानी एंड ऑल दिस वोल्टास, हेवेल्स जो इंडेक्स के पार्ट नहीं है, वो तो हैमर्ड होते रहेंगे. बट इंडेक्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रेट लाइन डाउन आई डोंट थिंक सो जाएगा. ऊपर लेंगे, थोड़ा तेजी करवाएंगे, और उसके बाद यानी मंडे ट्यूसडे थोड़ा ऊपर रखेंगे निफ्टी को स्टॉक्स को नहीं, निफ्टी को रखेंगे. और उसके बाद सीपीआई का जो डेटा आने वाला है अमेरिका का वेडनेसडे और थर्सडे अपना आने वाला है, उसके हिसाब से वो न्यूज बेस्ड डाउनवर्ड
बहुत शार्प रहेगा सर. आई सी 15,600 नेक्स्ट वीक सर. ये जो आप बोल रहे हो समझ भाई, हाँ सर. ऊपर जाएगा निफ्टी, ओके, यस सर. और जा भी सकता है, पर मैं बोलता हूँ रिलायंस का रिजल्ट खराब है, एक्सिस बैंक का ये चक्कर है, तो कौन लेने आएगा? सर लेने की बात नहीं है, मैनेज की बात कर रहा हूँ सर. जो मैनेज तो पहले से भी हो रहा था अरे पर रिलायंस. कौन मैनेज करेगा? कल की तारीख में सबकी फटी पड़ी है, सबका फ्रंट रनिंग खुल रहा है, दैट आई एग्री सर. ऐसे सिचुएशन में कौन आएगा बचाने को? बाप का नाम रखेगा? यस 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 सर. वी नीड कोई टू फंड सी द मैनेजर को ओपनिंग. मरना है क्या? ऑन द स्पॉट वो छुट्टी चाहिए क्या? कोई चूचा नहीं करेगा कल के बाद से ऐसे माहौल में। स्टॉक्स में तो हैमरिंग होगा ही होगा. स्टॉक्स में बहुत बुरी तरह से. अरे बॉस, मैं बोलता हूँ स्टॉक्स में नहीं, निफ्टी में ही हैमरिंग होगा। ये जो वाहियात बात है ना, ये निफ्टी में बाउंस आएगा, कौन से एंगल से बोलते हो? वो थोड़ा लकीर खींच लिया तो नहीं सर, बाउंस आएगा? पुट कॉल ऐसे रेशियो, नहीं होता है पुट कॉल शेयर रेशियो जो बाजार है. में। नहीं 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 नहीं, आप सर एक सुनो एक मिनट बार। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट. पुट कॉल रेशियो वीकली बेसिस पे 0.42 है. वो छोड़ो, वो कुछ भी होए, मैं एक मानता हूँ घटते में आरएसआई पुट कॉल रेशियो का महाबेन हो जाता है, वो थियरी बुल रन में काम चलता है। इधर कोई थियरी काम नहीं चलता है, एक ही थियरी है, सेल सेल सेल। आप चलो, आप मानते नहीं हो मेरी बात तो, हाँ मान लिया कि आपको एक्सपीरियंस है ज्यादा, कि नॉलेज है ज्यादा, कि व्हाटएवर। मैं बोलता हूँ कल सुबह में ना ऐसा भूचाल मचेगा जो तुम सोचा नहीं होगा, और जो मैनेज करने वाले ना वो सो गए, वो मर गए, सिधार गए। मैनेज कौन करेगा? वो कोई फंड मैनेजर बोलेगा मैं इन्फोसिस लेता हूँ, मारेगा उसका सीआईओ। सो डोंट बी अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन कि ये पुल बैक आएगा, आपने कोई थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लिया, ये टाशून टाशून पुट कॉल, ये वो सब कुछ नहीं है। शेयर बाजार में खाली चलता है एक्शन। ओवरबॉट में आप बेच दो, पटलून निकल जाएगा, ओवरसोल्ड में ले लो और पटलून निकल जाएगा। सो मैं बोलता हूँ जैसे बाजार चलता है चलने दो ज्यादा। हाँ, आप ये ट्रेपीज आर्टिस्ट मत बनो, जैसे सर्कस में होता है ना, इधर से उधर उधर से उधर, वो मत बनो। खाली जोकर बनो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ट्रेपीज आर्टिस्ट मत बनो, अपना काम नहीं है वो। अपना काम है बेचना या लेना। See, again and again I am saying stock market is the simplest of the simple game. You have to only decide whether you want to buy and what to buy. You want to sell, what you want to sell. That's it. Nothing. No oversold, overbought, ये वो कुछ नहीं। ऐसे नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से Dara, you will want to say something? सर सेलिंग सर आ गए, उनको बुलाते हैं. हाँ, क्या बोला? सेलिंग सर आ गए, उनको बुलाते हैं. हाँ, सही। ओके, बोलो ना भाई, बोलो। Sir, Sharad sir, I prefer to be a listener. I just want to listen to. I have nothing Oh, really. okay. Thank you, sir. Yeah.
हाँ सर, तो इवन आई वाज ऑफ द सेम ओपिनियन कि ओवरसोल्ड कैन टेंड टू गेट ओवरसोल्ड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, कि जब ओवरबॉट हो रहा था, ओवरबॉट चलते ही जा रहा था, तुम्हारा डेली टाइम पे देखो, वीकली टाइम, आरएसआई इज अ वेरी फार्स एंड वेरी बुलशिट इंडिकेटर आई वुड फील, कि मैं तो बोलता हूँ कि बकवास है सबसे ज्यादा। बस भाव को देखो, प्राइस एक्शन को बता देता है। इतना बजाज फाइनेंस देख लो, अभी वीकली में चल रहा होगा तुम्हारा आरएसआई या 20 या 25 का जो भी है वो यहाँ से तो और भी घुसने वाला है। 6,000 का सपोर्ट टूट जाएगा, उसके नीचे सपोर्ट चल से 4,000 पर। तो वहाँ पे तुम देखो कहाँ कहाँ पे आरआर है, कंटिन्यूएशन सेल करते रहो बस। किसी को अगर फ्यूचर में बैठने का ताकत नहीं है या हिम्मत नहीं है, नो आई डू नॉट नो हाउ दैट दे शुड प्रोसीड, बट आई वुड से अगर फिर भी कुछ करना है देन निफ्टी के पुट्स उठा के बैठ जाओ, कितना भी हमारा क्वांटिटी है। अदर देन दैट एडवाइस तो मैं नहीं देना चाहूँगा। चलो See, This I Amar, have to say something about that RBI's announcement during the market hours. ये बहुत गलत किया आरबीआई गवर्नर ने कि आप इंटरेस्ट रेट को मार्केट आवर्स में आकर के चेंज करा रहे हो। अब देखिए, जो हमारी लीडरशिप में है वो सब बड़े इन्वेस्टर हैं। अमित शाह के पास भी बहुत शेयर है, उसका आप इलेक्शन कमीशन में नहीं सर, हाँ ये सब पॉलिटिकल बातें यहाँ नहीं चलेगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पॉलिटिकल पर्सन। राइट। मैं नहीं लेकिन सो सर विदाउट पॉलिटिक्स बात कीजिए। आज आप सुबह बोले विदाउट शाम को बोले ज्यादा बेटर नहीं है? आप क्यों मार्केट आवर्स में आ रहे हैं? अब एक्सिस बैंक के भी शेयर उस दिन बिके, म्यूचुअल फंड के, सब चीजें आपस में घुल मिल गई, पता ही नहीं चला। ये सेलिंग एक्सिस बैंक के फ्रॉड की वजह से है या आरबीआई की वजह से है या इसके पीछे किसी का हाथ था? तो ये बड़ा गलत लगा मेरे को, तो आई थॉट आई मस्ट शेयर दैट इज अ लिमिटेड पॉइंट आई वांटेड टू मेक। आई वुड लेट टू जस्ट गिव वन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। तो अपने साथ जो हो रहा था 16,800 का लेवल पकड़ के, जो अपन शायद लास्ट वीक के स्पेस में अपन बात कर रहे थे कि 17,000 का पुट आरबीआई ने लिख लिया है या वॉट एवर, कि वो वाले लेवल को वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कुछ भी करके। तो 16,800 17,000 जो था दैट वाज बीइंग प्रोटेक्टेड। सो दैट हैड टू ब्रेक डाउन एंड देन इफ यू लुक एट प्राइस एक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब आरबीआई का अनाउंसमेंट आया तब एकदम से स्पाइक आया, इट वेंट टिल 850 और समथिंग, एंड देन इन द नेक्स्ट लेट्स से 6-7 मिनट्स or 10 minutes it's already down by the 200 points just immediately after the announcement had come. So there is one angle where you can look at it that ki RBI had to do something, and in fact they did on the same day when the Fed was about to hike it by 50 bips on the same night. So वो तो news था। So either they wanted to act smarter in front of the world कि अपन ने तुम लोगों से पहले कर लिया rate hike, or it is something that they wanted reason to sell for the big hands to exit. तो वो हिसाब से उन लोगों ने ये कर दिया कि सेलिंग जब आना है so then has to be a trigger, right? तो वो ट्रिगर विद इन द मार्केट जब आता है विल बी वेरी वेरी पावरफुल, एंड यू सी इन द पावरफुलनेस ऑफ दैट। अभी आज तीन दिन में तो 800 पॉइंट नीचे है मार्केट, अभी ऊपर से देखोगे तो 17,000 पे चल रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप सुबह बोलते तो डेली जो ट्रेडर है वो पोजीशन नहीं लेते। अब आपने अरे यार पोजीशन सबको बता के मुनीष जी एक मिनट अभिषेक जी, डीजे जी एक मिनट। मुनीष जी, there were times that Nifty was touching 17,000 and bouncing back. It was like सबको दिख रहा था कि मैनेज हो रहा है, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ओके, तो ये 3-4 स्टॉक जो है दे वर मैनेजिंग। तो बट एट दैट टाइम नोबडी वाज सेइंग कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है, बिकॉज वी वर सेलिंग एट दैट टाइम एंड वी वर आल्सो लूजिंग दैट। तो अभी डाउनवर्ड हुआ तो ये इशू है। this discussion is not leading Sir, may probably I add anything. some information, Sharat ji? नहीं, DJ. just a moment. I would say one thing. RBI acted because the Fed was to act, and RBI governor is a historian. He is not an economist. So this much is enough on this topic. DJ. Guys, I was analyzing what the FIIs have been doing for the past 3 days. अगर आप FNO में उनकी positions देखो, so on Friday, after the fall, FIIs have added about 2,500 crore worth of shorts in Nifty futures. In index futures, it could be Nifty and Bank Nifty. So FIIs are now bearish in futures and options on the Indian market. And what I have observed in the past is when FII do very heavy selling of Nifty futures, they generally sell very heavy in cash also. So that is how they take the market down and make money in their
FNO positions. And I think they are doing this strategy because there is a restriction on how much shorting they can do in the market, which Yeah, RBI had put after, SEBI had put after the initial corona crash. yeah. So I am going to side with FII on it. If I get a rise, I will very happily short. If it opens bottom down, I will wait for some opportunity, or I might sell some Cs which are a bit far away, and that way I have some safety net, right? If in case there is a bounce back. No, So but my Tara, yeah, there are around 10 to 20,000 active FIIs. So we don't know who's playing what and who's long and short. It's correct. just a general number, Yeah, a yeah. cumulative It's net position, but it's I find it a good proposition to side with the FIIs because number. No, no, no. I am with you on that, but yeah, I'm just saying it's a it's a it's a number. You correct. can interpret it however you want. If Samath interprets it, he would say markets will become bullish because they will cut the shorts. So it's open to debate, and I don't know. But see, two, three things: Reliance results, Axis Bank fraud, heavy mutual fund selling. Third is FII will sell nothing less than 8,000 crores on Monday because a foreigner who's sitting outside, who doesn't know India's capital except Delhi, will say, "Get me out. There's a fraud. There's a scam." That's it. That only Correct. one word from one person is enough. Scam. Mm-hmm. Everything will go down in a jiffy. So I'm very skeptical and bearish. Yes. हाँ विशाल भाई कुछ बोलना है? Yeah. सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा स्पेशली ऑन द बॉन्ड yield साइड द यूएस बॉन्ड yields in last week 1 week has almost risen by 10% to Yes. 3.14. Indian bond yields are also have gone up from I think 7.1 or to 7.44 or 7.5 levels. Now these indicators, this is a very crucial indicator that the smart money is moving out from riskier assets to the safer assets. And given the uncertainty, given the inflation fears, this outflow from equities will continuously keep going, and the inflows in the bond will continuously keep happening. So there would consistently be a selling pressure which will definitely be there on the markets. And like you rightly said, given that के I mean एक्सिस का स्कैम का बात हो रहा है, तो पैसा तो सर पैसा निकल के कहीं पे तो उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. I mean let's say there are redemptions over 10,000 crores and bank and mutual fund sell let's say 15,000 crores. तो 5,000 करोड़ तो उसको कहीं पे म्यूचुअल फंड्स को कहीं पे डिप्लॉय करना ही पड़ेगा. दे वोंट डिप्लॉय इन इक्विटी, they will move to the bond market probably. No, So no, this would be they have the option of sitting on cash. Don't forget that. right, right. Agreed on that. Yeah. So, Yeah. so I mean, there would be definitely we a lot of action on the bond markets as well going forward in next few couple of weeks, I believe. So, वो भी No, एक indicator track करना Indian bond market closed at 745. So I'm sure it will open at 755. Khel khatam. Or dollar rupee will open above 77. Khel khatam. So where are the blue or bright spots? I And don't find any. Sir, I don't find any. no, no, and one thing, this whole game from June 2021 to October 2021, people have been mesmerized. Market is up, market is up, market is up. People have bought so much. Unbelievable, unbelievable. Everybody has a huge portfolio. Now, our things are unfolding. Fear at 16,400. Nothing is lost, but everything is lost in terms of stocks. Stocks are down between 10 to 50%. So
I'm saying is from June 21, we are mesmerized. Buy at any cost. So what we are going is suffering because of our actions. आप इतना पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डालते थे तो इतना तकलीफ नहीं होता था. आपने डाल दिया, अब भुगतो. रिडम्पशन आएगा कल, थोड़ा भी. समझते हो क्या होगा? कौन सा स्टॉक बेचेगा म्यूचुअल फंड? एफआईआई के पास में 40 स्टॉक है, मेजर स्टॉक्स. ओके. और म्यूचुअल फंड के पास में 400 स्टॉक है. क्या बेचेगा, क्या नहीं बेचेगा, कितना बिकेगा, क्या मालूम. और एक बात जो अपने डिस्कस नहीं करते हैं वो है पीएमएस. ये पीएमएस का तो कोई वो फंडा ही अलग है. उसमें जो रिडम्पशन आया किसी का भी, तो कैसे क्या वो पीआई इंडस्ट्री बेचेगा? वो वो 10 लाख पोली कैप बेचेगा? इम्पॉसिबल. वो बिकने वाला नहीं है. सो एक माया जाल है. रोज बंद भाव देखो, खुश हो. कुछ बिकने वाला नहीं. हाँ, आपके पास में 500,000 2,000 शेयर है, बिक जाएंगे. बड़ा क्वांटिटी बिकने वाला नहीं है. इम्पॉसिबल है. हाँ समझ बोलो. सर पीएमएस की बात ही अलग है, यानी उनके पास वो जॉकी है, पोली कैब है, पीआई है, फिर दीपक नाइट्रेट है, पीडीलाइट है. वो अगर 2 लाख शेयर भी बेचने आएंगे ना तो वो भी कोई तो सामने क्या होगा पता ही नहीं होगा उसमें तो. तो बाटा है उनके पास. होल लॉट ऑफ स्टॉक्स विच नो वन ट्रेड्स. एमआरएफ है. अभी एमआरएफ भी अगर 100 भी कोई सेल करने आएगा तो भी कौन लेगा 100 शेयर? तो वो तो तकलीफ होने ही वाला है सर. आपकी बात सही है. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम क्लेरिफाइंग माई सेल्फ कि जो बाउंस होगा दैट विल बी सोल्ड ऑफ, दैट विल बी सोल्ड ऑफ मर्सीलेसली. ऐसा नहीं है कि आई एम बुलिश ऑन द मार्केट. आई एम सेइंग आई एम थोड़ा बुलिश बुलिश भी नहीं हूँ. मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप में दैट विल बी जैसे बोलते हैं ना कि आपको दिखाएंगे, ग्रीनरी दिखाएंगे जो पहले दिखाते थे, बट दिस ग्रीनरी विल बी सोल्ड ऑफ इंट्राडे ओनली. अरे तो समझ भाई, या तो यस आस्तिक बनो या नास्तिक बनो यार. दोनों मत बनो यार. हाँ, मैं एक बात, कैन आई से समथिंग? या ऑलवेज. प्लीज. Yeah, see, now I am listening to a lot of Twitter spaces, all spend a lot of time on Twitter, okay, over the weekend. Everybody is saying sell the bounce. Bounce आएगा, sell करो. अभी bounce नहीं आएगा ना, क्योंकि bounce आया तो सब retail sell करना start कर देगा. So logically, if retail has to lose, then सेल हो, बाउंस हो सकता है ना भी आए, क्योंकि कल हर कोई वेट करेगा बाउंस का सेल करने को. तो मुझे तो लगता है शायद बाउंस आए ही ना. No, but DJ, as I mentioned to you, रिलायंस का रिजल्ट खराब है, एक्सिस करेक्ट. बैंक का है, एफआईएक्स का सेलिंग आएगा, म्यूचुअल फंड का सेलिंग आएगा. तो कहाँ से जो बाउंस का बात करता है ना, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. सी होने को तो हो सकता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट 99% मैं राइट हूँ. $77 है, वो किसको मालूम है? ये क्या होएगा? 77 20 होएगा, क्या होएगा? सीधा 78 हाफ होएगा. तो है तैयारियां. सर आप क्रूड बोलो. भी देखो ना, फ्राइडे को कितना 3% रैली किया है. हाँ, क्रूड ने ब्रेकआउट दे दिया, 10 year yields ब्रेकआउट दे रहे हैं. एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज गुड फॉर इक्विटीज. सो सर राजेश जी आए हैं. सर राजेश जी. सर हाँ. राजेश महापात्र जी को इनवाइट करिए. और सर एक सवाल आपसे है. सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कल 8-1 हजार करोड़ का एफआईआई का सेलिंग फिगर आ सकता है. तो व्हाट इज द चांसेस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
we could hit, we could see a one down freeze in the indices in the coming week. क्या बोले? सर सर मैं Sorry. पूछ रहा एक्टिंग हूँ अगले हफ्ते के अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक लोअर सर्किट बाजार के अंदर लग सकता है? नहीं नहीं, ये सब लोअर सर्किट वो सब बच्चों के लिए है, और ठीक है बाजार बंद हो जाएगा ना, ये ना. द मेजर पॉइंट इज इन मे itself आई थिंक विल सी ह्यूज डैमेज. आप सोचा ना होगा, वो बोलते हैं ना 15,400 ना पॉइंट है ना, ये ना, वो कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है. मक्खन पे वो गर्मा गर्म लोहे का छुरा, ऐसा हालत है. तो प्लीज मेरी बात सीरियसली लीजिए, समझिए. आड़ा टेढ़ा लाइन ड्रॉ करके मन मत मनाओ, मत करो. आपका खुद का पैसा है, आपके पास पैसा है तो आप पैसे वाले हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो. मैं बोलता हूँ शेयर बाजार से पैसा निकालो, बेच के निकालो. आपको अभी मैं 2-3 आइडिया देता हूँ, और एक एक लॉट से आप सौदा करना, एक एक लॉट से. आप देखो 2 महीने में इतना पैसा आएगा, कोई हिसाब नहीं है. 3 सौदा करो या 10 सौदा करो. पहला है टाइटन. एक 196,000 करोड़ मार्केट कैप है. 1,500 करोड़ अगले साल गलती से कमाएगा, ये साल के हिसाब से. मेरे हिसाब से 800 करोड़ भी नहीं कमाएगा. चलिए मान लिया 1,600 करोड़ या 1,500 करोड़. 1,500 करोड़ और 196,000 का मार्केट कैप है, तो कितना पी हुआ दारा? दारा कितना पी हुआ? 100 प्लस 130 100. 120 के आसपास. हाँ. जब गूगल मिलता है 17 में, काय को लेगा तू टाइटन? वो डिविडेंड देता है, कुछ नहीं देता है. वो पैसा बांटता है, नहीं बांटता है. क्यों लेगा? वाई विल यू बाई टाइटन? सेल वन लॉट एट 2,200, बाई 2,400 कॉल. 8-10 रुपया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 200 रुपये का. आप ये सौदा मंथ एंड तक चलाओ, 700-800 रुपया मिल जाएगा. वो दूसरा है एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक बेच दो, जो भी भाव है क्या मालूम नहीं है, 675, 675 675, तो वो बेच दो और 720 का कॉल ले लो. एक लॉट, हाँ एक लॉट, और सो जाओ आराम से. 500 में मिलेगा. क्योंकि ये फ्रॉड के एक बात है, ये बैंकिंग इज अ फनी बिजनेस. बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रेस्टीज, रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन खड्डे में गई उसकी, वो भी खड्डे में चला जाएगा. एंड बिलीव मी, एक्सिस बैंक इज अ सेमी पीएसयू बैंक. Previously it was a PSU bank and now it's semi PSU bank. So दूसरा हुआ एक्सिस बैंक. वो तीसरा है वो चोला फाइनेंस. मैं देख रहा हूँ मार्च 2020 में 105 हुआ था, 350 हो गया. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. अब 500 हो गया, माथे मारा. 550 हो गया, काट डाला. फिर देखता रहा, ऑपरेटर है. 700, 800 किया, 750. अब आया है 650 पे. एक लॉट बेचो 650 पे, 700 का कॉल ले लो.
और कसम से ये 300 रुपया हो जाएगा और ये स्कैम में है। फिर पता चला कि एक्सिस बैंक इसमें इन्वॉल्व है। तो दीज आर एक्चुअली मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है, बट अभी के लिए 3 स्टॉक में एक एक लॉट आप कर लेना, 110% प्रॉफिट होएगा, लॉस नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉस मैं दे दूंगा, क्योंकि इट इज अनफेयर ऑन योर पार्ट, but you will make money, you will make money, you will make money. Now, another thing is, in a bear market, you are tempted to sell this also, that also, that also, that also, that. No, don't do that. How much ever is your capital, you allocate properly and use half of it only. Because as Samad Bhai is expecting a rally, if it comes, you will have a problem. So use half your capital and don't use many stocks. How much ever is your appetite? 3, 4, 10. But according to me, never exceed 6. 6 items से ज्यादा मत करना, नहीं तो लॉस 110% हो जाएगा। वो दूसरा बात है, फ्यूचर में 190 आइटम है, 190 आइटम्स। तो आपको सिर्फ 4, 5, 6 ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि बिलीव इट और नॉट, बेयर मार्केट्स में बेयर लोग ही पैसा खोते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हैं। नहीं करना ये गलती, रिस्ट्रिक्टेड रखना, अपने आप को संभालना। वो तो मन होएगा, ये भी ठोकू, ये भी करूं, वो भी करूं, इसको पकड़ू, ये करूं, तो ऐसा मत करिएगा। आपका सेफ्टी के लिए, आपका भले के लिए। बिकॉज सेलिंग इज नॉट योर नेचर, बाइंग इज योर नेचर, selling is against your nature. You can't sell what you don't have, and people are not expert at that. Okay, I have spent n number of years mastering the art, but at times I also falter. डर जाता है आदमी, डर जाता है, विप्सो आता है। तो उसके लिए आप आधे से करो, कोई डरने का जरूरत नहीं है। और दूसरा बात है, ये लोग जो बोलते हैं कि शेयर बाजार इज अ जीरो सम गेम, इट्स टोटली स्टूपिड, totally false. Stock market is not a zero sum game. Money passes from the rich to the richer, and richer to wealthier, and also poor people become rich and rich become poor. So there is, ये जीरो सम गेम एक का बात है कि अगर आप टाइटन लेते हो सपोज, तो आपने फ्यूचर में लिया, बेचा कौन? आर्बिट्राजर ने। आर्बिट्राजर कौन? जो कैश में माल लिया और फ्यूचर में बेचा। तो कैश में तो वो डिलीवरी उतरा, so somebody has sold in the cash market and you have bought in futures. Now when you will unwind, the arbitrager will buy it from you and sell it in the cash. So there is not a zero sum game. Believe me, money exchanges hand, पैसा आता जाता है। If this is a zero sum game, अरबों रुपए का भुगतान वो क्यों होता है? टाटा पावर है, 10 करोड़ का फ्यूचर खड़ा है और 6 करोड़ के ऑप्शन होंगे, 10 रुपया मूव होता है, 100 करोड़ फ्यूचर में ऊपर नीचे होता है। हाउ कैन यू से इट्स a zero sum game? Somebody is losing, somebody is gaining.
But the, as such, you can also say कि हाँ zero sum game है, वो किसी को आया कि, but the persons are different. आपका तो आप पैसा लग गया, दूसरे को आया कि नहीं आया, आपको क्या मतलब है? मैं मन कर रहा है और एक स्टॉक बोलूं, टाटा ग्लोबल। उसका कैपिटल है तकरीबन 97 करोड़, 765 का भाव है, तो समझो ना 100 करोड़ और 750 का भाव है, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 75,000 करोड़। अर्निंग 220 रुपया, 230 करोड़। अगले टाइम आएगा 200, अगले टाइम आएगा और कम, तो चलो मान लो कि इतना ही आता है, 1,000 करोड़ आता है। तो आप 75 टाइम में टाटा ग्लोबल लोगे या अमेरिका में 14 का पी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल मिलता है, वो लोगे? मतलब यहाँ पे तो गुब्बारा ही गुब्बारा है, गुब्बारा ही गुब्बारा है। तो मैं बोलता हूँ ये बाजार बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है, उसे दूर रहिएगा। और ये दिमाग में डाल दिया कि 5 साल 10 साल, अरे भाई 5 साल 10 साल क्या, 1 महीना भी टिक पाओगे तो गनीमत है। 10 साल में तो क्या होगा किसको मालूम। और मेरे हिसाब से फॉर इंडियन मार्केट a P ratio of 15 is more than enough and substantial, because mark my words, Dow Jones will be available at 12 P. India shining, India growing, India make in India, आत्मनिर्भर, ये वो, खाना खराबी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये सब बकवास है, सभी बकवास है। बोलिए भाई, कोई और बोलो अभी मेरा। सर एक और स्टॉक है टाटा ग्रुप का ही जो एकदम आपको बहुत पसंद आएगा ये वाले लेवल पे, उसका नाम है टाटा केमिकल। वो छोड़ देते उसका, वो रिजल्ट ऐसा बना के भेज दिया ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। तो ये ये उसको चीज है बोल ना रहे कि मेरे को ना एक ये मतलब दिस वन कॉमन ट्रेंड आई बीन ऑब्जर्विंग इन ऑल टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो बुल मार्केट में चढ़ गए एकदम। एक स्टॉक था उसका नाम था टीटीएमएल, वो 12 रुपए का स्टॉक था, 300 रुपए हो गया। हैं। ठीक है, एंड देन देर आर वेरी वेरी बिग हैंड्स प्लेइंग इन दैट, एकदम खतरनाक। वो सुपर ऐप बनाया, न्यू है कि वो है कि वो है, बट उतना वैल्यूएशन व्हेन द कंपनी इज नॉट इवन मेकिंग प्रॉफिट्स। वो एक हुआ, टाटा मोटर्स हुआ। देयर इज समथिंग अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ टाटा कि अभी जो चल रहा है ना, दिस द काइंड ऑफ अर्निंग्स दे आर शोइंग, द काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दे आर शोइंग एंड द काइंड ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स दैट दे आर ट्रेडिंग एट, वो मतलब काफी खराब चल रहा है। तो वो अगर ऐसे चलता रहा फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, then Tata has gone from the chairman's post, things do not look really rosy for the Tata Group. In fact, I would rather say कि ये जो अपना बूम बस्ट साइकिल होता है, तो उसमें this could be one of the casualties. I'm just speculating के हिसाब से नहीं, but in terms of the corporate governance कि हाँ, and then we also have सुशील केडिया सर जो LTTS पे थे काफी bullish. नहीं, Okay, let us not take names. Let us not take names. नहीं, I'm sorry about मैं it. क्या No, no. बोलता हूँ, मैं क्या बोलता If you are born to only troll people, you will spoil this space. Otherwise, जिसका जो stop loss लग Okay. गया, नहीं नहीं जो नहीं, एक जो मिनट, तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या अभिषेक? You've been trolling me like anything, and now in this space I also just you अरे said started. that, सबका right? अपना अपना stop loss है. What stupidity is this? शरद भाई, ये लोगों को Okay, I रोको अरे यार just आप. said, I just एक said, मिनट, let's not take हाँ names, बस so let's एक मिनट, make एक nothing मिनट, about it एक now. Let's stop it over there, please. Thank you. ओके। वन थिंग आई वांटेड टू से इज कि शेयर बाजार में
कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि जो रॉन्ग ना गया हो. बिल्कुल. I have gone wrong 87% of the times. So I'm no saint. I'm no big deal. I'm just one ordinary trader who by chance made it big because of luck. I was standing at the right place at the right time, and things happened. So if you measure my IQ, it's not that great. It's simple. I'm a simpleton. Okay, I'm 6'1", very heavy, but I'm a simple man. लक बाई चांस आ गया, पैसा रह गया, कर लिया तो बड़ा बन गया. तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, एक चीज है, पेशेंस है और परसिस्टेंस है. छोड़ूंगा नहीं तेरे को, वो एटीट्यूड है. कुछ भी हो जाएगा, छोड़ूंगा नहीं. So I think there are a lot of ingredients for for which you require to be a super successful. There are various things, and criticism is not my forte. I never ever criticize anybody. I would only say what is wrong, what is right, but I won't pass a judgment whether you are right or wrong. That's for, I don't know what will happen if tomorrow I could be wrong, someone would be right. So generalize things. Let us be humble, nice to each other. There is a lot of space to be nice. There is a lot of space to be great. There is a lot of space to be really loving each other. हाँ सुशील भाई बोलिए. No, I think I'll step in and share my thoughts after some time more. Let me get into the groove of what is getting discussed, so I'll be able to add more value. Yeah. So, Raju bhai. may I be allowed to speak? Yes, please. Okay. So, I've been listening on other spaces of Sharad Bhai, and then I went and did some research. So, I'll try to relate these things of bear market with a little different perspective. You see, everything is returning today back to pre-COVID levels. So, जब मैं back गया, so I found that from March 20, Nifty has risen exponentially, and all the stocks have accordingly risen exponentially. We all know this because it happened is because of retail participation. Okay. But since this retail participation has happened and now it has stopped, foreign F2s are selling. Now, if you correlate this with international market, so Nouriel Rubini, everybody knows, he predicted a 2008 fall bear market. His partner gave a statement. He said, see, round the world, inflation is rising, interest rates are rising, and growth is slowing. In such a scenario, there's going to be a realignment of the world markets. Nobody can ignore this. So when I see that and I see the charts, I find a correlation that yes, this is going to happen. If I see other factors also, these are also same pointing, and a Nifty back down to 9,800 retracement is possible because that is the level March 20 it was moving. Another thing I'll say, शरद जी बोलते हैं ना कि ये है, मैंने फ्राइडे को खुद देखा कि कैसे गिरता है. कोफर्स में 800 अटका हुआ था, 4,100 से वो 15-20 मिनट के अंदर में गिर के एलसी मारा, 405 गिरा, 15 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 5% और गिरा. एंड आफ्टर आई जस्ट केप्ट माई पेशेंस, आई वाज जस्ट सीइंग एंड रिलेटिंग टू शरद जी कि कैसे बाजार गिरेगा अचानक. But my luck, slowly 2-3 घंटे में it came back to 3,900 and I sold. I made a loss of 3.5 lakh rupees, and taking an advice, I sold and I'm happy. I still have to do this in TCS, in Kotak Bank, and also Jubilant. So, बहुत बात simple है. You see, everything is coming back to normalcy, and in this elevated environment where interest rate is rising and arbitrage funds are going back,
the market is bound to fall. And the retail investors in the last 2 years who have invested heavily into this market are in for a big, big loss, or they will have to keep this as a long-term investment. But market is definitely bound to go down. Thank you. It reminds me about the retail investor who's invested in mutual funds. Believe me, you are in for a long, 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 long haul. NAV will be dropping every day, every day, every day. You won't know what to do. So I suppose mutual fund investors should be alert. At least 30-40% they should liquidate tomorrow. And anyway, with this Axis Bank scam, the whole industry is under scanner. The whole industry, everybody is looking very, I don't know what, but everybody is scared. I don't know why. And should be scared. How cynic, sir? Hello. How is So your batting? Sainik ji is not a speaker. I think Rajesh ji is here. Let's hear thoughts from Rajesh ji. Yeah. No, yeah, can you hear me? Yeah, Yes, yeah. sir. I would have loved to hear more people. I don't have anything much to add. Last time I was in this space, uh, from then onward, couple more things have happened which I can report to you. I mean, of course, one, of course, that since the time I spoke in this space, RBI has announced a surprise hike of 40 basis point and CRR hike. And I think on that day there was some other space where I said how I see it, and I said read the RBI decision for for not what it said or what it is, but for what is not said and what wasn't done. So where I said that we really don't understand how in 1 month's time the RBI's understanding of the global situation changed, because there was nothing to change. What it reported the day it hiked was something which was known to everybody right at the beginning or late March. So they should have raised interest rates earlier. They waited too long. Uh, so, couple of things, other developments that have happened is that yesterday the government raised cooking gas prices again by 50 rupees, which is almost another 5% hike. And I think you should see another round of series of petrol and diesel prices being raised in time to come. Now, there's one problem that I'm finding it a little discomforting, is that rates. If international crude prices are going up, your prices will go up. You can do things to cushion against how much you want to actually pass on to the retail buyer at a retail level and all that. See, one thing everybody will agree that even if things have to go up, even if prices have to rise, or administrated administered prices have to be raised, if they are done in an orderly calibrated fashion, there is less damage that is or less harm that is caused to the broader economy. If you take recourse to shock treatments, which I find somehow this government is has taken a fancy to giving shock treatments or shock announcements, then it's not good from from a policy standpoint. It is not good. If RBI had raised 25 basis points in its first meeting, then on June 6th raised it by another 25 basis points. If
or even before that, if they had taken, and by now, if we were having repo rate at around 5 or so, which is fine, which should be fine, in fact, more than fine, there's a difference when you come and say, okay, 40 basis points, and at the same time you say, you start indicate drawing parallel to how you cut it by 40 basis points when COVID hit us. Now people read it very differently. They say, okay, is the RBI's view assessment as alarming as it was at the time when we were hit by the pandemic? Possibly, it could have been a Freudian slip on the part of the RBI governor also when he said this. So that's kind of worrisome. So that I see as worrisome. So that's one thing that was not there and has happened from the time we spoke last. These are the developments that happened, which basically point to that as far as inflation is concerned, you are not going to see any respite. Uh, I think, forget about any respite for another 3 quarters, at least 3 quarters, because the way this has become structural and the way it's all getting into different channels. All of you probably would have been hearing already about the power crisis and what's happening to power tariffs. One more thing, last time when we had spoken, and some people had asked that is there a real payment crisis happening at a state level, right? I had Yes, given examples of one or two states. yes. Now, 3 days ago, another news development that came up, which you would have noticed. Now, some of these things are getting reported in the media, and some of these things are not getting reported. Haryana decided not to give any grant to its universities. So the 160 crore that the state universities required, Haryana government decided it will only give as loans. So that and Haryana is a reasonably prosper. I mean, it's a prosperous state. Its government has access to more revenues than several other backward states. If you take my state, Odisha, Bengal, Bihar, which are so if Haryana is being forced to do this, it just underscores what I was pointing out last time as to how state finances are coming under greater strength. So this is one more evidence that I've collected since we spoke last time. Why am I citing all these things and why I keep going on adding to this list? If you see, all of these things are actually pointing in one direction to show that things are going from bad to worse on the broader economic front. And I'm not seeing anything that could be said. No, things have looked up somewhere. So the happy news is are far and few in between, and the news that makes you unhappy and worried are coming at a frequent intervals. In fact, their frequency is growing. Okay, and they're spreading across all things. So that was the second thing which I wanted to put. Lastly, somebody said, well, now capital is going to be realigned at a global level, because things are changing and a new normal. Again, people are looking at a new normal. Now, what will happen at a broader level? I'm not going to predict what level or so. That's not my business, nor my expertise. But what I can see that if you take the pool of the developed markets and the emerging markets, they will fall into two clear categories in time to come. One, which would be, because inflation is something which is going to be, you know, confronting everybody in the next over the next few quarters. But there will be some economies where you will be seeing the inflation challenge growing, but they would be still sustaining some reasonable amount of growth. In some cases, there might be some acceleration in the growth rate. And the second category of economies will be those which will be slipping into the stagflation mode if they haven't already slipped into the stagflation mode. My fear, unfortunately, is India will be falling in the second category, and the rest is what you can conclude. If if my fear, I hope I am proved wrong, but I think I won't. My fears are likely to come true. So if we are going to be seen at at a global investment level as an economy which has slipped into a stagflation phase for a considerable period of time,
multiple quarters, then obviously it has got implications to how your funds will flow and what kind of bearing that will have on your market. Thank you. No, Rajesh bhai. I just have a one point, Raj, to No, mention. no, 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 no. Hold on, you mute yourself. Rajesh bhai. Where's Rajesh bhai? He's gone. Okay. आप बोलिए भाई साहब. मनीष भाई बोलिए. हाँ, मैं राजेश जी को यही बोलना चाह रहा था कि एक जो सही अच्छा पॉइंट आया था कि जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 करोड़ से ज्यादा 1,50,000 करोड़ क्रॉस कर गए, वो एक अच्छी न्यूज थी इकोनॉमी के लिए. नहीं और भाई साहब, you are misinformed. It was because of more of imports and inflation. It was not a magic number. It was a bad number. You are misinformed. राजीव भाई, एक सवाल पूछना था आपसे. Sorry, I got locked out. ये एक्सिस बैंक का जो लफड़ा निकला म्यूचुअल फंड. या आई वाज सेइंग, ये जो एक्सिस बैंक में लफड़ा निकला है, आर यू अवेयर ऑफ इट? You can throw some light on it. You being a journalist, you are aware of facts, figures, what's happening. Rajesh bhai. Sir, just to say, one Ravindra ji bhi hai and Regina D bhi hai, who are editors in print media. So we can also ask them if they are ready to come as a speaker. Okay, Regina and Ravindra Gautam. Okay, I invited them, but वो लोग accept नहीं कर रहे हैं. Anyway, they don't want. हाँ सुशील जी बोलिए. शरद भाई, आपकी तबीयत ठीक है? एकदम ठीक है. चलो बढ़िया है. So I may appear to be biased towards Teji. I use the word I may appear. I may appear. Yes. But what each person does in real life and how some idiots will on social media distort it. जिसके पास idiocy का business है वो idiocy करेगा, जो stop loss लगा के trading करता है वो trading करेगा, जिसको investment करना है वो investment करेगा. So I share what I think frankly. See, the concerns that are across the board and the concerns are being, the concerns are playing out in such a way that the best of the people are getting rattled. I think at the current juncture, my sense is we may be reaching very close to a full-on bearish consensus. Well, this is a subjective reading and that may not be right, because of which I eventually, despite all the intellect one would gather, finally will go with charts. But these perceptions do affect the chart reading. तो मैं थोड़े बहुत descriptives पहले लेता हूँ. See, the unending scorching rally in the US dollar this time has happened in a slightly unusual sense. Usually what happens is within the G7 currencies, Japanese US dollar are on one side, बाकी की 5 करेंसी के अगेंस्ट में US डॉलर अगर स्ट्रॉन्गर होता है तो Japanese yen becomes even stronger. Japanese yen would become even weaker if the dollar becomes weaker against the other G5 currencies, other G7 currencies. So the US dollar and Japanese yen had a very comforting relationship for 30 years where the yen was acting as the penumbra, the lighter part of the shadow. Dollar ठुकेगा तो yen और ज्यादा ठुक जाएगा. So yen को manipulate करके the US administrator, Japan in any case does not have its own army. After World War II, it's America that is occupying Japan. Press में से भी वो बात अब लोग भूल गए 70-80 साल में. But somehow, the Japanese central bank always acts as the second fiddle to the Fed. But in the last 6 months,
the Japanese yen became substantially weaker, much weaker than the amount of weakening the euro or the GBP or the Canadian dollar or the US dollar faced. And now the Canadian dollar and the Australian dollar are basically currencies that would get into strong uptrend if commodities are strong, because these two economies, their dominant GDP is through commodities exports and mining operations. So last 2.5 months, the unusually sharp drop in Canadian dollar and Australian dollar on one hand, और Japanese yen को तो कूट काट के एकदम छेद के रख दिया. So the equations on the currency complex are unusual and different from how things were stable for last 20 years. I'm right now not drawing any conclusions. I'm making a list of the unusual things I notice. So the usual mindset with which a lot of things are interpreted may or may not work exactly the same way that as things have worked in the last 20-25 years. The other unusual thing that is happening is across the board. Let's talk about the US yields first, and then we can go to any other major market. From 2000 to 2022, ये 2000 से 2020 तक, there was a continuous unending collapsing chart of the yields. 30-year yield, 10-year yield, 5-year yield, 2-year yield. एक तरफा ठोकते ही जाओ, yield एकदम पत्थर कर दिया. They were close to zero for the 2-year and 5-year, almost 10-year भी 1% के नीचे ही चला गया था, and 30-year was tottering at 1.5. ये मैं US की बात कर रहा हूँ. There were several economies in the West where the yields were actually trading negative. This world has gone through idiocy of the highest order in surviving through the tumult of 2018 and 19. 2018-19 में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थी जर्मनी में. आप बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपसे वो ब्याज लेगा. तो इन सच ए वर्ल्ड इन 2018 and 19 when indices tottered higher और बी ग्रुप को पूरा पेल पाल के रख दिया था, और जब 2020 का जो जनवरी से मार्च का जो स्लाइड आया लार्ज कैप्स में, उसमें बी ग्रुप की मौत हो गई. बी ग्रुप पहले से मरा पड़ा था और मरे हुए के प्राण ले लिए बिल्कुल. बी ग्रुप के अंदर लोगों के पोर्टफोलियो अगर 60% घट चुके थे, 50% घट चुके थे, तो वहां से भी और 50% का फॉल 3 महीने में आके लोगों को मारा बिल्कुल. और ये वर्ल्ड वाइड हुआ क्योंकि 2018-19 में ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सर्टेन इकोनॉमीज में रख करके पूरा मॉडर्न कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल थ्योरी की बत्ती सुलगा के छोड़ दी. इन अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मॉडल, इन अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनारियो और वेरी क्लोज टू जीरो इंटरेस्ट रेट्स, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो सारे फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं, उस मॉडल का जो मीनिंग क्या निकलेगा, जिस कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो है वो कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा. एंड दैट इन अ सेंस रिफ्लेक्टेड ये टोमाटो जो हो गया, सब अभी मजाक चल रहा है ना व्हाट्सएप पे, टमाटो से जोमेटो चीपर हो गया है. तो दिस प्रॉफिलिगेट मनी दैट रैन इनटू प्राइवेट इक्विटी वेयर देयर वाज नो मार्क टू मार्केट, और कहीं से भी जो लिक्विडिटी छापते ही चले गए थे सेंट्रल बैंकर्स. जापानीज सेंट्रल बैंकर ने 2020 में जो हेलीकॉप्टर मनी फेंका, उस कंटिन्यूअसली लास्ट 10 साल से हेलीकॉप्टर मनी चालू है, और QE1, QE2, QE3 और इंसैनिटी हो गई है मनी सप्लाई की. और उस पीरियड में इतनी मनी सप्लाई के बावजूद भी जो वर्ल्ड नहीं संभल रहा था. तो शरद भाई, आज जो मंदी के माहौल में जो हम अचानक से हमारा माइंड आया है, पर ये दुनिया फंडामेंटल क्राइसिस से बहुत लंबे टाइम से गुजर रही है. 2003 का जो मार्केट बॉटम था, वहां जॉर्ज सोरोस छाती ठोक के बोल रहा था कि 2020 Y2K का जो नैस्डैक का टॉप था, और वहां से जो आज आप बात कर रहे हो शरद भाई, जिस कन्विक्शन के साथ, दुनिया के सबसे बड़े सटोरिये ने 2003 के भी बॉटम में ठोका दबा के, वो बॉटम में भी काटा नहीं, उसका 20% ऊपर माल कटा. तो आई एम नॉट रिफ्यूटिंग द रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड. आई एम नॉट येट कंक्लूडिंग. आई एम गोइंग टू मेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एनेक्डोट्स एंड स्पेशल ऑब्जर्वेशंस ऑफ टुडेज सिचुएशन, एंड आई लीव यू ऑल टू थिंक. हम यहाँ पे ये साबित करने तो जमा हुए ही नहीं है कि शरद भाई राइट है कि मैं राइट हूं, कि अभिषेक को सब लोग रॉन्ग ही दिखते हैं या मैं खास करके रॉन्ग दिखता हूं. वो सब तमाशा है. We have gathered here on a large dinner table, a mutual dinner table where everybody has brought some food from home, और एक दूसरे का खाना चखेंगे, किसको क्या फायदा हो जाए देखते हैं, एक दूसरे की बात से, जानकारी से कौन सा पिक्चर किसके साथ जुड़ जाए.
तो 2003 में अगर जॉर्ज सोरोस 2000 की मंदी से 2000 से 2003 तक कमाते कमाते भी उसका सौदा जब 2003 में नीचे डबल हो गया और वहां से जो मार्केट अनयूजुअली फिर गया, जॉर्ज सोरोस ने भी मुंह की खाई। 2003 से जो 2008 का जो तूफान चला, हाउसिंग फाइनेंस का जो बबल था यूएसए में, और वो जो 2008 का जब क्राइसिस आया और एक तरफा 9 पिंस की तरह बाजार गिरा, तब तक वर्ल्ड ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स नहीं देखे थे। 2009 के बॉटम पे एक बहुत विचित्र घटना हुई थी, थोड़ा सा इतिहास दोबारा दोहरा लेना अच्छा है। When America went through the biggest financial crisis, when America had actually gone through the, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया में क्या लगता है अभी, क्योंकि आ रहा हूँ वहां तक आ रहा हूँ, 2 मिनट आप सब्र और रख लो, वहां पे आ रहा हूँ फट से। मैं सारी चीजें वर्ल्ड की इंटर रिलेटेड है। 2009 में इतिहास के अंदर भैंस अगाड़ी भागवत है, मैं भी नहीं समझता हूँ। मेरे को क्या लेना देना ये से, मेरे को 2 मिनट रुक जा, क्या बेचने का है लेने का है वही बताओ। अब मेरे फ्लो के अंदर मैं फास्ट फॉरवर्ड तो 2 मिनट में करूंगा, 2 मिनट और सब्र रखो आप। 2009 में जो अनयूजुअल घटना हुई कि द लार्जेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस वाज बीइंग फेस्ड बाय अमेरिका, जिसके हाउसिंग बबल के बर्स्ट होने के कारण द होल वर्ल्ड हैड गॉन इनटू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस का ओरिजिन है, वहां से तो एक्सोडस ऑफ कैपिटल होना चाहिए था। द होल वर्ल्ड थॉट द कैपिटल का अनबिलीवेबल फ्लाइट आएगा और अमेरिका खत्म हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली उल्टी घटना हो गई। द अनबिलीवेबल फ्लाइट इनटू अमेरिका हैपेंड व्हाइल दिस क्राइसिस वाज देयर। तो जो आप शरद भाई बार बार अक्सर बोलते हो ना, और जो आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं, कि ये सारा शेयर बाजार पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा कबाड़ा है, और कबाड़ा किस स्केल पे और कहां तक जा रहा है वो गणतरी करना और इमेजिन करना कभी कभी मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। इसलिए लास्ट में चार्ट पे आना पड़ता है। तो जो 2008 के इस क्राइसिस में जो सबसे पहला बिजली का झटका लगा था, 80 बिलियन, उस जमाने में 80 बिलियन बहुत बड़ा था, $80 बिलियन का यूएस ट्रेजरी ऑक्शन फेल होने वाला था। सिर्फ 5 मिनट बचे थे, कोई बाजार में बायर नहीं था, दैट वुड हैव क्रिएटेड अ पैंडेमोनियम ऑफ एनी डिग्री वर्ल्ड वाइड। सडनली 2 नंबर्ड अकाउंट्स, वन फ्रॉम बर्मुडा, वन फ्रॉम केमन आइलैंड्स, आके $80 बिलियन का पूरा माल पी गए, और वहां से अल्टीमेट एक्सोड फ्लाइट ऑफ कैपिटल इनटू अमेरिका बिगेन। तो किस लेवल का गवर्नमेंट मैनिपुलेशंस वर्ल्ड वाइड है, और एक गवर्नमेंट की चलाई हुई तेजियां मंदियां हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठोक दिया 2020 की मंदी चलने के पहले, जब सारा बी ग्रुप पहले ही बर्बाद था, किसी के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुल के एक ओपन फोरम पे बोलना किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये समझ लेते हैं कि शेयर बाजार में मैनिपुलेशन किसी भी लेवल का हो सकता है। 1991 में जब मैं बाजार में फॉर्मली आया, उसके पहले टाइम पास कर रहा था कॉलेज में, बाजार की गली में जाके, जब फॉर्मली आया 14% का फिक्स्ड रेट था AAA रेटेड बॉन्ड्स का, ग्रासिम और हिंडाल्को और रिलायंस का। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो लिबरलाइजेशन के और सबसे बड़े संसार के इकोनॉमिस्ट ने ओपन मार्केट रेट्स रातों रात अनाउंस कर दिया, और सीधा 18% का बॉन्ड का भाव हो गया AAA रेटेड का, और सारी बैंक्स की बैलेंस शीट पे अनबिलीवेबल लॉस खड़ा हो गया। इट वाज अ क्राइसिस ऑफ एन अनबिलीवेबल प्रोपोर्शन, जहां से लगता है कि शेयर बाजार को तो जीरो हो जाना चाहिए, और इतिहास की सबसे बड़ी तेजी वहां निकल गई, क्योंकि हर आदमी फंडामेंटली रंगीन हो गया। भारत ने अपना सोना भेजा अमेरिका, और वहां के कोई ने स्कैम रच दिया। ये मैनिपुलेशन किस लेवल का कब हो जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा छाती पीटने का, ताली पीटने का अपना हिम्मत नहीं है। मैं रॉन्ग हो सकता हूं, पर मेरी हिम्मत एक लिमिट की है, क्योंकि बाजार में तेजी मंदी किस एंड तक कब बन जाएगी और किस लेवल का खेल कबाड़ा हो जाएगा वो समझना मुश्किल है। और थोड़ा अब आगे आते हैं। अभी अगर मैं मेरी सिर्फ जंप करता हूं चार्ट रीडिंग पे, क्योंकि द कन्वर्सेशन आई वाज डूइंग कुड कीप ऑन गोइंग ऑन लॉन्गर, दैट ओनली लीव्स अस टू इलस्ट्रेट दैट दीज मैक्रो कंसर्न्स वी हैव बीन लिविंग विद देम फॉर लास्ट 20 years, और हम बार बार उसको कारपेट के नीचे डाल देते हैं। किसी एक दिन तो बहुत बड़ा तहस नहस बर्बादी होने वाला है, और वो जिस दिन भी वो मंदी आएगी, हो सकता है अगर वो अभी चालू हो गई है तो कहां तक नीचे जाएगा ये इमेजिनेशन के बाहर है, पर वो जब आएगा और सब लोग बर्बाद होंगे तो देखा जाएगा। पर आज की तारीख में अगर मैं चार्ट्स को देखता हूं तो इस बेरिश वन मोर वेरी क्रिटिकल anecdote, not because I want to sound like I am agreeing with Sharad or with other bearish people. जर्मनी जैसा पावरफुल कंट्री, उसकी करेंसी जिम्बाब्वे के जैसे तबाह हो गई थी। एक लोफ ऑफ ब्रेड मिलियन डॉइशमार्क का हो गया था इन द ईयर 1919, इन द फर्स्ट मेल्टडाउन, जिसके कारण ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट बुक व्हेन मनी फेल्ड मस्ट बी रेड
तो इमेजिनेशन की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, किस लेवल की तबाही हो सकती है। द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप नेशंस, जर्मनी कंगाल हो गया था 1919 में, और उसका स्टॉक मार्केट कहाँ चलता था, तो जर्मनी के कारण वॉल स्ट्रीट का क्राइसिस आया था। व्हेन मनी फेल्ड, 180 पेज की किताबें रोए खड़े हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं कि मंदी की क्या लिमिट हो सकती है, कहां तक जा सकता है। 2008 के टॉप से अगर नीचे निफ्टी 1600 तक चली गई थी, 65% तो निफ्टी गिर गई थी। तो दैट काइंड ऑफ अ बबल बर्स्टिंग, इफ दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी, तो नीचे की कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है लिमिट नीचे की पिछली बार से भी ज्यादा बुरी हो जाए। पर अब अगर मैं चार्ट्स पे आता हूं, तो हो सकता है कि आई एम सफरिंग दैट इनोसेंस इवेंचुअली विंस। सब कुछ सोच साच के भाव के साथ जो चल पड़े, अपने इंटेलेक्ट को सस्पेंड करके सौदा वही कर पाएगा और वही जीत पाएगा। वही बार बार कोशिश करते हैं और इसीलिए चार्ट देखते हैं कि बुद्धि का कोई अंत नहीं है, बुद्धि में फंस जाता है आदमी। पर फिर भी हो सकता है चार्ट देखने के अंदर में भी मैं बहुत ज्यादा बारीक देख रहा हूं और उसमें मैं हो सकता है रॉन्ग हो जाऊं। सो डोंट टेक व्हाट आई एम सेइंग टू सीरियसली, गो बैक एंड थिंक फॉर योरसेल्फ। तो एक जो करेंसीज कॉम्प्लेक्स में मेरे को एक एक्सट्रीम पॉइंट आ गया है ऐसा दिखता है। हालांकि मैं यूएस डॉलर इंडेक्स पे 98 में भी लगा घूम जाएगा, 100 में भी लगा घूम जाएगा, पर अगला वीक में बहुत केयरफुली देखूंगा। मंडे को अगर डॉलर इंडेक्स नीचा खुल गया और नीचा बंद हो गया तो बहुत बड़ा रिवर्सल साइन होगा। 6% तक का अगर करेक्शन डॉलर में आ जाता है तो एक बार स्टॉक मार्केट में 10-12% की रैली बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। और अपने रोज के सौदागर हैं और रोज के ट्रेडर हैं, वो कोई एकदम बड़ा हेज फंड खोल के थोड़े बैठे हैं कि बेच करके हम बैठ गए साल भर के लिए और हम संभाल लेंगे। 3 गुना 4 गुना की लीवरेज है डब्बे में खेलने वाले की, 5 गुना लीवरेज है कच्चे के सौदे में, 5 गुना की लीवरेज ब्रोकर मजे से देता है मरने के लिए। 12% की रैली आ गई तो अपने तो इस भाव में नया मत्थे मार करके पाटड़ा उड़ जाएगा। तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मंदी वाले को भी। तेजी वाले की हालत खराब है और मंदी वाले के लिए चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि सारा गांव मंदी में, अरबपति से लेके रोडपति अभी सब लोग मंदी में। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। तो एक विचित्र चीज देखी मैं वीकेंड पे, 500-700 चार्ट्स देखता हूं क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स के साथ 2 घंटे का कॉन्वर्सेशन करते हैं संडे मॉर्निंग को, तो आई हैव टू लुक एट इट। वन वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट आई एम नोटिसिंग, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट कि जिसको पहले से फोरसाइट है वो जो सौदा करके बैठे उसी को बाजार पैसे देता है। ये इंडिया बुल रियल एस्टेट एकदम, अगर मैं चार्ट पे से टाइम की एक्सिस को डिलीट कर दूं और स्टॉक का नाम हटा दूं, खाली मेरे को वो चार्ट दे, तो दैट इज अ चार्ट आई एम वेटिंग टू ग्रैब ए बाई ऑन। और वो फिर भी टूट जाएगा और कल अभिषेक ट्रोल करेगा तो उसका प्रोफेशन ट्रोल करना, हमको स्टॉप लॉस से सौदा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड सारे रियल एस्टेट के स्टॉक्स बढ़ेंगे। डीएलएफ में एक बार अगर 10% की रैली जैसी चार्ट दिखती है, कल को अगर ऊंचा बंद आ गया, अगर मैं मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस को देखूं जो ठोक ठाक के 6 महीने में, 7 महीने से एक तरफा मंदी चलते चलते वो 50% से नीचे का करेक्शन हो गया है। ये भाव से 30% की रैली मुथूट और मन्नापुरम में हो जाए बड़ी बात नहीं, बल्कि चोलामंडलम को जबरदस्ती पकड़ के रखा था, बहुत जोर का 3 दिन में क्रैश आया। एनी रीबाउंड इन दैट, चोलामंडलम दाब के ठोको सामने मुथूट मन्नापुरम लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, रॉन्ग राइट मैं अपने पैसे से होऊंगा, मेरा क्लाइंट मेरा स्टॉप लॉस लगाएगा। अभिषेक की रोजी रोटी ट्रोल करके आती, वो मेरे को ट्रोल करेगा, सबकी दुकान वैसे ही चलेगी, वैसे ही चलाएंगे। तो ये हो गया मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर आईसीआईसीआई बैंक एक सॉफ्ट करेक्शन देके भी हेजिटेंट है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को कूट काट के भुक्का निकाल दिया है और अभी भी इसमें इतना गांव दुनिया फंसा हुआ है, यहाँ से 100 रुपया बढ़ते फिर कोई ठोक देगा इसको, किसको चलने नहीं देवे। और उधर अगर मार्केट में एक रीबाउंड रैली बन गई और एक्सिस को ठोक के रखा हुआ, जब दुनिया फंसी वो पड़ा ही रहेगा, सड़ेगा, एचडीएफसी सड़ेगा मान लो दोनों। और आपने आईसीआईसीआई एसबीआई में माइनर रैली कर ली और आरबीएल को खींच दिया जोर से, बंधन को जोर से खींच दिया। मैं शॉर्ट टर्म की बात, पर अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देखूं कि रुपया बॉन्ड्स में डाल नहीं सकते, गोल्ड में गजब की दुर्घटना हो रही है वर्ल्ड मार्केट में, 50 साल का इतिहास गवाह है कि व्हेन द इंटरेस्ट रेट, द रियल इंटरेस्ट रेट इन अमेरिका इज नेगेटिव, गोल्ड उस टाइम तेजी में फट जाता है। इन्फ्लेशन से सिग्निफिकेंटली लोअर इंटरेस्ट रेट, कितनी इंटरेस्ट रेट हाइक के बावजूद है, रियल इंटरेस्ट रेट इन अमेरिका इज डीपली नेगेटिव। और उसके बाद गोल्ड की चार्ट में जरा सा भी मोख नहीं है किधर भी, वो 3% बढ़ेगा फिर कोई ठोकने आ जाएगा। गोल्ड को जबरदस्त मैनिपुलेट किया हुआ सेंट्रल बैंक ने, गोल्ड में जा नहीं सकते, बॉन्ड्स में जा नहीं सकते, तो पैसा कहाँ रखें। तो अपन टाइम फ्रेम चेंज करके साल भर के व्यू से आरबीएल ले लेंगे। आरबीएल को इतना पीट दिया है, आई एम कंक्लूडिंग इन नेक्स्ट 1 मिनट, आरबीएल को इतना कूट दिया है कि मेरे को लगता है आरबीएल में मेरा 10% 15% घट जाएगा, उससे ज्यादा मेरा ध्यान नहीं कि घटेगा। 100 रुपए के नीचे नहीं जाएगा, 112-15 में मेरे को लेके साल भर के लिए बैठने में डर नहीं लगता है। मैं अनग्लैमरस बैंकिंग स्टॉक्स, ये बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये जो भूले बिसरे बिना का गीत माला है ना, भूले बिसरे गीत,
ये बैंकिंग स्टॉक्स में पोर्टफोलियो 8-10 स्टॉक्स की पुड़िया बना के 5% पोर्टफोलियो का बिल्कुल अनग्लैमरस स्टॉक में डाल के बैठ गया। ये टारगेट है हमारा इस वीक में करने का कि पैसा कहीं तो रखना है, एफडी में रखने का मतलब नहीं, कहीं रखने का मतलब नहीं। तो आई एम गेटिंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ अनग्लैमरस स्टॉक्स जहां पे मेरे को टेक्निकली डीप वैल्यू दिखती है, फंडामेंटल डीप वैल्यू को मैं बिलीव नहीं करता हूं। और अगर एक रैली चल पड़ी तो फिलहाल के लिए जब तक 16,200 नहीं टूटता है 17,200 आने की संभावना बन सकती है और बनेगी, दोनों में फर्क है। आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड इफ इन केस दिस रैली मटीरियलाइजेस ओनली आफ्टर दैट आई विल टेक अ व्यू कि इस रैली के अंदर वो पैटर्न्स मिल जाएंगे कि 17,200 जाके वापस 15,000 आएगा क्या। एज ऑफ नाउ टू सम अप, मेरे को अभी भी चार्ट के ऊपर वो एविडेंस नहीं मिल रहा है कि 15,000 की मंदी हो जाए, 15,000 के नीचे बाजार चला जाए विदाउट गोइंग इनटू अ न्यू हाई। एंड लास्टली इवन ये जो नैस्डैक को लेके 25% घट गया, सब लोग जो छाती कूटे जा रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ये जो फेसबुक आधा हो गया है, इसमें भी ये भाव से 30-40% की रैली जैसी पॉसिबिलिटी की चार्ट्स हैं। दोस बाई कॉल्स हैव नॉट येट ट्रिगर्ड। सो टू सम अप इन नेक्स्ट 2 लाइन्स, रिस्क is going to be faced by each and every participant in the market. तेजी वाले का या मंदी वाले का 100% श्योर शॉट सौदा कभी भी नहीं बनेगा। रिस्क सबके सर पे है और कॉमन सेंस ये कहता है ऑलरेडी इतने घटे हुए बाजार में जहां पूरा कंप्लीट कंसेंसस है, शायद मंदी वाले के सर पे ज्यादा रिस्क निकल गई अगले 15 दिन में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे कि बड़ी मंदी और चलनी है तो एक बार आने दो 1000 पॉइंट की रैली, फिर मारेंगे वापस। दैट्स व्हाट माय कॉल इज। In response to Sushil's व्यू, आई वुड से नॉन स्टॉप 12,000 हो जाएगा। वो डॉलर इंडेक्स कूदता रहेगा, इंडिया में असर नहीं आएगा बिकॉज एक्सिस बैंक का लफड़ा इज अ बिग थिंग, रिलायंस का रिजल्ट इज अ बिग थिंग, और फॉरेनर्स का बिकवाली रोज 5, 6, 7, 8 हजार करोड़ है, वो इज अ बिग थिंग। वी कांट डिस्काउंट। और 11 महीने पहले 12,000 इंडेक्स था, 11 महीने पहले 12,000 ही इंडेक्स था। ये तो चढ़ा के गुब्बारा बना दिया है। एंड हैविंग सेड दिस, माय लिमिटेड पॉइंट इज, वो ठीक है कि बोलते हैं पूरा गांव मंदी पे है, ये है, वो है। अरे बॉस, 252 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, उसमें मंदी वाला कितना होएगा? 50,000 करोड़। क्या मंदी है? अगर 252 ट्रिलियन मार्केट कैप है और मान लिया कि 50,000 करोड़ का शॉर्ट है, अब मेरे हिसाब से 10-12 हजार करोड़ का शॉर्ट हो, फिर भी मान लिया, तो क्या, व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्ट? नथिंग। बट शरद भाई, दैट रेशियो इज ऑलवेज द सेम। शॉर्ट सेलर माइनॉरिटी में ही होता है, पर सबका मन मंदा है, हर आदमी डरा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये क्या होता है जब सिचुएशन बदलती है ना, देयर इज लॉट ऑफ, और आप मेरे को से ज्यादा एक्सपीरियंस है कि व्हेन थिंग्स स्टार्ट मूविंग, वो दिखता नहीं है, महसूस होता है। रोज घटता है, पूछना पड़ता है क्या लगता है, क्या ये वो। सो और आप बोलते हो शॉर्ट शॉर्ट, 10 करोड़ एचडीएफसी बैंक वायदे में खड़ा है, 10 करोड़, तो शॉर्ट है क्या वो? नो, यू आर रॉन्ग। देयर इज नो शॉर्ट इन द सिस्टम। शॉर्ट होता तो इतना घटता ही नहीं। टाटा पावर 10 करोड़, वो अनबिलीवेबल सौदा खड़ा है, अनबिलीवेबल। हाउ कैन यू से पीपल आर शॉर्ट? पीपल आर लॉन्ग, लॉन्ग अप टू द नेक, unbelievably long. So with, I don't agree with your hypothesis that people are short and लोगों का, see, बोलने का बहुत इजी है, ध्यान मत दिए, मैं भी शरद भाई, आपकी मंदी के धारणा पे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए निफ्टी में? 12,000 की मंदी खेलने के लिए स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? नहीं, स्टॉप लॉस बेच दो ना खुलते में। Your voice is badly cracking.
हेलो Yeah, sir. Now it's fine. हेलो हाँ बोलो बोलो आ शरद रहा भाई, है आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? सी आई वुड सजेस्ट इन योर betterment, I am saying, tomorrow morning 1 2 3 become fresh, wait for 2 hours, take a position thereafter. This is what I normally do when I am in two minds. Immediately I square off. I don't wait for anything. That is why my market is always small. When in doubt, get out. थियरी बनाने के लिए बहुत टाइम मिल जाएंगे, बट पैसा खोने में टाइम नहीं लगेगा. प्लीज, humble request, tomorrow 1 2 3 2 hours 3 hours, then you take a position, reassess your position. यार 10 करोड़ HDFC बैंक खड़ा है, किसको बोलता है 10 करोड़? यार 10 करोड़ बेचते बेचते कितने साल लग जाएंगे? So, and I foresee that ये HDFC बैंक है ना, सबको ले डूबेगा. वो पोजीशन हो जाएगा 20 करोड़, देख लेना. वो बन जाएगा स्टेट बैंक. ये दलदल है, और दलदल में से बाहर निकलो, लाकड़ी का सहारा लो, निकल जाओ. बाद में बहुत पछताना पड़ेगा. दैट्स ऑल. ओके, Sir, shall I go ahead? या प्लीज. Just because थोड़ा सा पर्सनल सी चीजें नहीं हो वो रही छोड़ थी. दो ना, छोड़ Okay, दो, okay. छोड़. Let's leave it at that. Let's leave it at that. तो Yeah. कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ पे जो मैंने, चलो मान लिया कि भी 16,400 या 15,700 जो लास्ट टाइम आया था अपना लेवल, तो वहां से 2,000 पॉइंट की रैली हो गई है. तो वो मिस करने की चीज नहीं है. इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि अगर तुमको सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप करना है, तो देयर माइट बी समवन लाइक मी और समवन लाइक शरद शाह सर जो सोचेंगे कि चलो अपने को 15,700 पे अपने को उठाना नहीं है माल, अपन को वेट करना है कि कहाँ जा सकता है ऊपर, वहां पे जाके फिर से ठोकेंगे उसको. तो देयर कुड बी टू डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट्स, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी एमटीएम लॉसेस इन दैट, in when you're holding your positions very rigidly. बट दैट इज समथिंग वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि अगर तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर तुमने चलो मान लिया कि चलो 5 6 पेटी है, वो इमेजिन दैट्स जस्ट रिस्पेक्टिव टू देयर ओन कैपेसिटी कि जितना दे कैन हैंडल. तो मेन थिंग इज दैट यू हैव टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट में भी अगर समझ लो कि 500 या 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट पे चले गया मार्केट, तो इवन देन यू शुड बी एबल टू हैमर इट अगेन. That is the takeaway. As far as stop losses go from here for bears, I think 17,000, 16,800 is what I would be thinking as a stop loss for the bears. But then I would still not look to buy the market, even if it goes about 16, 16,800 or 17,000, whatever the figure is. See, this stop loss and all, it comes into play if inbuilt stop loss is not there. Normally, I have an inbuilt stop loss in system, so it's easy for me. I am relaxed. I am chilled. I don't have to worry. So everybody can play like that. That you take a position in the market, whether long or short, and you take a contra put or a call and go to sleep. Your margin will be 1/3. So you will benefit there. You can trade more. You have this uh, benefit of stop loss, inbuilt stop loss. What else do you want? Plain simple, कल एक टाइटन बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो, कॉल ले लो, खत्म, chapter over. And if you have a margin of 10 lakhs, suppose, use only 5 lakhs. Don't use
10 lakhs, don't. Use 5 lakhs. And see, if you don't make money, I assure you, I will help you in making money. That much confidence I have. You will make money. And believe me, I also feel, lena chahiye, ye karna chahiye, because it is human that I am attuned to buying. But resist. Don't fall a prey. सस्ता है नहीं नहीं उ- सस्ता समझ के कुछ मत लेना. इम्पॉसिबल है पैसा बनाना. सस्ता और सस्ता होएगा, महंगा और महंगा होएगा. बट आज के दिन में महंगा और सस्ता हो जाएगा. हाँ सैनिक भाई बोलिए. Yeah, thanks, Sharad Bhai. I'll just make two quick points and leave. In my whatever little experience I have since 1991, I have followed fund flows over this period. I have never ever seen a more overbought market than what we are today. Overbought. In terms of bullishness, this is the highest level of bullishness. I'm talking at 16.4. I'm not talking of last year or last month or last week. I'm talking yesterday. If you take today, that is as of close of yesterday, this is the highest overbought market and highest bullish sentiment market I've ever seen. Okay. Let me talk about pure statistics. If we feel that people are bearish, then it should reflect in the flows. Every single month, the flows are only increasing. What does it mean? It means that more and more people are bullish about the market and therefore they are putting the money. So, this is clearly showing you purely on data. Whatever may be there in our mind, we may feel everybody is bearish or everybody is bullish. Finally, you have to look at numbers. Numbers clearly show people are extraordinarily bullish and they are talking with their money. And they are putting money every single month, it's only increasing. Second, you look at the sentiment part of it. Now, 10 of us may sit here and say we feel bearish, so the whole world is bearish. Or 10 of us may sit here and say we feel bullish and the whole world is bullish. Look at what is actually happening. Look, switch on any channel. Have you seen anybody saying we are in a bear market? Nobody. I have not seen anybody who has said that we are in a bear market. If there is no strategist who has come on TV and said they're scared to utter the word bear. I follow all TV channels. I follow strategists. I follow people who don't like me or people whom I may not like. But I keep an open mind. I have not heard anybody chati ठोक के बोलेंगे कि ये bear market है. Whereas in any other time, I have seen 91, 92, I've seen 97, 98, I've seen 2002, 2003, I've seen 2009. Every single time, there were net outflows. People were hesitant to come to the market. People asked me questions as to how will you feed your family? Nobody is asking those kind of questions. Everybody is saying, what can I buy? Not what can I sell? So, if you look at pure sentiment, not a single fund manager is coming on TV. Forget fund manager. Obviously, a fund manager will not want to speak bearish because then people will not put money in his fund. But there have been instances in the past where Mr. Narayan of ICICI Pru closed a particular fund in 2018 because he felt that he could not disburse money into the fund. No strategist who comes. Everybody is talking of let's hide in IT, let's hide in FMCG. So they're still wanting to hide. Now we are talking here of taking money out and moving out. Whether it goes to 12,000, 14,000 or 16,000, that is not important as much as where is the sentiment. Sentiment is extremely bullish among people who have money. I don't have money. So whether I am bullish or bearish, it doesn't make a difference. So, and in terms of pure voting with their feet, the people are voting with huge amount of money, including your LIC IPO, which is oversubscribed. So I feel we are sitting on a huge, what shall I say, a hugely biased market, which is entirely bullish biased. So any small, let's say, shake can, one has to be very, very careful if you're sitting on such a bullish bias. With this, I'd like to thank you, Sharad Bhai. Let's leave it here. Thank you. No, well summed up, Sainik. One thing I will add to it, that the open interest is humongous. Never ever I have seen. HDFC Bank used to be a 3 crores or 2.5 crores. It's at 10 crores
10 crores HDFC Bank long in futures, 10 crores Tata Power, and what not. How it will unwind? My biggest worry is one small stone, एक कोई पत्थर मारेगा ना, छोटा सा नन्ना सा, ये पूरा डूब जाएगा. That's it, Fenix. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you, Sharad sir. Both of us are on the same wavelength. Probably we are seeing something which others are not seeing. Hopefully, others will see the way we are seeing. Thank you. It doesn't matter. It doesn't matter. And I don't mind if I am wrong also. But I am very, very strong on my views. And it will happen. That's for sure. It will happen. 12,000 will come. कोई वो कितना भी आ जावे, 12,000 आएगा, मई जून जुलाई में आएगा. That is 110%. You can't have stocks at 150 PE still in this market. And what technology, so-called technology, they are contract laborer, whatever. 35 ka PE when Google is at 17 PE, where are you? What type of market is this? And Sushil bhai, stop looking at lines. Stop looking at charts. Start looking at logic. Logic is must. If you don't have logic, ये लॉजिक वालों का भी ना 15,600 से जब 18,100 आया था ना, तो सब लॉजिक बंद हो गई थी. तो जिसके लिए जो काम करता है भैया, अपने चार्ट से चलते तो कम से कम सौदा कट जाता है. ट्रोलिंग चलती रहती है, सौदा कट जाता है. चार्ट नहीं देखेंगे तो गर्दन कट जाएगी. भाई साहब, आपका मर्जी है, आप देखते रहो. मैंने तो जस्ट ऐसे ही बोला कि थोड़ा बहुत लॉजिक भी समझा करो. सारा लॉजिक देखने के बाद लास्ट में लॉजिक को सस्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि बाजार का लॉजिक सबसे बड़ा है. क्योंकि आप लॉजिक जो देखते हो ना सर, सेम लॉजिक 15,600 में भी थी, 18,100 आ गया ना बीच में, तो वैसे एक और रैली आ सकती है. नहीं, गेम तो चालू है. गेम सी शेयर बाजार का एक खूबसूरत बात क्या है, गेम इज ऑलवेज ऑन. वो फुटबॉल मैच नहीं है कि 90 मिनट में खत्म होता है. Game is on. Sharad bhai, why don't we invite Yogesh Chande to speak? He's a accomplished securities lawyer, and maybe he can throw some light on this Axis Bank fiasco. Yogesh bhai, Yogesh Chande ji, can you please send a speaker request? Sharad bhai, I can notice him in the third line. His handle is @yo_Chande. He speaks very eloquently well on what SEBI is up to and the latest fiascos with SEBI. तो एक्सिस बैंक के मैटर में he may be having some insights. दिखते नहीं है, मेरे को दिखते नहीं है. उनको बोलो ना हाथ ऊपर करे. योगेश भाई, send a speaker request, Mr. Yogesh Chande, unless you are eating dinner and we are in the illusion that you are there in the space. And it might be useful to even hear his views on the latest order on SEBI on stallion assets. नहीं, वो फालतू का बात है. वो कोई मतलब का नहीं है अपने लिए. नहीं, अगर स्मॉल केस में भी दुनिया भर के रिसर्च एनालिस्ट का पोर्टफोलियो अनवाइंड होगा तो लाखों लोगों का माल बिकेगा फिर. नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो मेरा स्पेस है ना कोई मतलब है. खाली क्या लेने का, क्या बेचने का, और क्यों, उतना ही है फंडा. ज्यादा अपने कहाँ दिमाग लगाएंगे. सी मेरा IQ माइनस है, मैं कहाँ से पहुंच पाऊंगा ये सब. गिर भाई आप पाओ ना. अभिषेक, यस. नहीं सर, लेट्स गेट क्रेडिट सर. नहीं आ रहे. हेलो. हाँ किट भाई बोलो. शरद भाई, thanks for inviting me. I think the trend is down, and to justify your view, you can get any data and justify your view, but the markets are supreme. बाजार वही करेगा जो उसको करना है.
हम जितना चाहे देख ले, एक्सप्लेनेशन दे दे, बट द मार्केट कैज एन एफ. अगर उसको ऊपर जाना है वो जाएगा, अगर नीचे जाना है जाएगा. But currently the long term trend is down. You may have minor bounce back, but things don't look all that rosy the way it is. You know, so I think, and I always believe that the biggest money is made on the surprise side. The biggest losses happen on the obvious side. I think Mr. Senik made a very valid point based on this data, whatever it is, that everybody wants to buy. In this game where over 99% lose money, less than 1% people make money, how can everybody be on the right side? आगे जो बाजार को करना है वो करेगा. You may have a bounce back of 300 points, but the big question is if the IT guidance. I mean, I'm not a fundamental guy. I always believe, as Chikoda says, fundamental is fundamental. If the guidance is so good, why is the price going down? Bob Bhagwan che. Eventually, where it settles is anybody's guess. So far, we've been holding on for so long, whereas globally the markets have gone down. It's just a matter of time how soon or how late we catch up with the markets. And going by your track record, you've been a market wizard for the last 40 years, and people know you. So I think, one should always consider what the experts have to say. I mean, experts like you. आजकल आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट ये वो देके. It is that easy that you can evaluate globally. If Nasdaq is down about 23 odd percent, why aren't we down? The debate can go on and on and on. It's a never-ending story. But I think the trend is your friend till the time it bends. That's it. Thanks, Sharad Bhai. Okay. Sharad bhai, may I add something here? Yeah, please. Yes. So actually, past few days I talked to some youngsters, including my nephew, who invests in shares, and they have seen the recovery crash from Corona, and their belief is if markets go down, they'll recover very fast. So they are not afraid of putting money. They are very bullish. Their assumption is okay, as soon as the Ukraine war ends, market will bounce back like it did in 2020. So the sentiment out there for investors is still extremely bullish. And if you look at the data also, they are just buying. FI is selling and retail is buying. Retail has not stopped there. They continue to buy very heavily. Yep. So, yeah, that's it. That's all I wanted to say. Thank you, Sharad bhai. I will answer your question. It's better to bet against the house. The house is the retail. It's better. The odds are better. Chances are better. Correct. So if you are a singleton who is not afraid of taking chances, you should short the market. You shouldn't be long. Because if local is buying, retail is buying, but FI is selling 5,000, 10,000 crores every day. So one day will come that retail will not have money to buy. Then what? And I think you missed this when I said this Axis Bank fiasco will lead to some redemption for sure, 110% from various mutual funds. Then what will happen? That is the question. If there is a redemption, what will happen? Who will buy what? FI local institutions own 400 stocks. FII own 40 stocks. तो वो 400 स्टॉक में से क्या बेचेगा और क्या नहीं बेचेगा? ये टेक्नोलॉजी बेचने जाएगा, ये विप्रो 180 हो जाएगा. लिख के रखो आप, क्योंकि 180 उसका फेयर वैल्यू है. हाँ, और दूसरा बात मैं बोलना भूल गया. In US, I am very much interested in US markets, you can say. The biotechnology stocks and biosimilar stocks are available below book value.
available below book value. And here API 40 times book, 50 times book. What joke यार. इसको कौन उल्लू बना रहा है? वो ठीक है, बाजार ऊपर रहा, निफ्टी ऊपर गया, ये अपने सुशील भाई बोला 15,400 का 18,000 हो गया, तुम क्या किया? अरे मेरा क्या है, कुछ नहीं, निफ्टी में नहीं खेलता. But look at the damage it will cause, boss. If you understand where I'm coming from. Biotech stocks are available at book value in USA. Unheard of in India. Google at 17 and very shortly it will be available at 14. My God. Google at 14 and we Titan at 150p. Come on, something is wrong, Sushil. You can't say I'm so stupid. You will have to agree to this. And HDFC Bank, still it is a 3 times book. Why? Why on the earth JP Morgan is quoting, Goldman is quoting, Citibank is quoting, Bank of America is quoting 1 time 0.8? Why? Because we are idiots. We don't know how to value stocks. Spaces. Sharad bhai, one small request. We have Rajesh Palvia, who's from Who? Axis Securities. Rajesh bhai Yes. from Axis Securities. I think he can throw more light. I Yeah. request So, if you can add him as a speaker. Rajesh bhai. yeah. So if he requests, I can put immediately. Sure, sure. Rajesh Palvia, could you raise your hand? We also have Vishal Narshal. Sharad bhai. I think you can invite this to the guys. No. See, my problem is I'm not that tech savvy. So if they would put request or anything, I can immediately do it. Sure. I request Rajesh Palvia and Vishal Narshal to raise your hand. Sharad bhai can add you as a speaker. Sir, make me co-host. I'll do it. Yeah, please. Abhishek, go ahead. Yeah. Because I can see them, Yeah. Yeah, even I can see them. Yeah. Great job, Abhishek. Thanks. भेजा मिला. हाँ सर, मिल गया. क्या हुआ? Yeah, sir, I got him. See, until he comes, I would like to say one more thing. Whatever happens in USA does happen in India with a time lag. So don't be surprised if tech is quoting at a low. Is he around, Abhishek? Yes, sir, he's here. Yeah. So take it. Yeah, hi, good evening. Hi. Yeah, good evening. Yeah, thanks. So, yeah, I was listening to you, Sharad Bhai, and yes, I am really agree for that. The kind of selling which we are continuously seeing from FIs, so जो FI का flow है negative side में, so what exactly is happening in the market? They keep on selling slowly, and one fine day they do hammering in the market because retail जो buying side में है, and the indicators which we are seeing for the long term, which is really showing a very bearish picture. And I think after 2 year we are seeing that kind of negative crossover on the long term indicator, and which really played their role for at least 1 to 2 quarter. So what I am seeing that 1 to 2 quarter, so at least we are going to see a pain in the market. So whatever pullback, minor pullback which we are seeing in the market, and the kind of optimism is still the
larger players are holding that market will again move back to 18,000 plus level in very easy go. That is not going to be the case this time, because the kind of distribution across all the sectors which we are seeing, it is clearly sign of they are not shorting the market, they are liquidating their long position. This is what we are feeling as of now, because there are two type of market. One is short in the market to encash the opportunity to play some negative trigger or some negative event which are lined up in the market. So sometime participants take the short position, or funds takes their short position to play that event. But this time there are continuous flow of negative flow, negative news flow, as well as liquidation is happening. So this is what we are seeing, and we feel that furthermore pain we are going to see for next 1 or 2 quarter. So this year though would be very difficult again to have such kind of bullish market which we have experienced in last 2 year. So my take is to remain short, and till market not crosses above 17,400, I won't be go aggressively long in the market. Whatever pullback we will be seeing is an opportunity to again review sector as well as the stock कहाँ पे कितना pullback आया है, and comparatively we have to take the position on the short side only. So that's the view which from my side. Thank you. To add to his point, FIIs hold 44 trillion worth of stocks. How much? 44 trillion. उसमें से आधा ट्रिलियन और बेच देगा ना तो 10,000 हो जाएगा. और वास्तव में प्रोसेस चालू ही है. कोई कुछ भी कहे, if given a chance they will offload the entire stock, because in US the valuations are this, in India the valuations are this. Why will anybody hold? For what joy? HDFC Bank is a well-researched, well-run bank, and all the banks are well-run. JP Morgan also, Goldman also. तो वो लेगा कि ये लेगा? For what joy? So, and HDFC Bank is more expensive than all the banks. So, my limited point, we will see offloading. See, it's human mind. Rajesh bhai, Yes, 11 महीने पहले 12,000 ही था निफ्टी, समझे? पर आप भूल गए कि 17,000 को घर बना दिया. 12,000 was for donkey years. 12,000 नहीं क्रॉस करता था, donkey years. 11 महीना क्रॉस कर लिया, 18,000 हो गया, तो आप उसको सच मान बैठे? नहीं. It was a misnomer. It's a trap for all gullible investors to jump in. That is what Pied Piper. This is the exact word, Pied Piper. Everybody has got sucked into it, and they will realize it later. Sharad, with your permission, can I ask Rajesh a question? Yeah. Rajesh, since you work with Axis Securities, would you like to comment on, how do you see this, Axis Mutual Fund stuff unraveling in time to come, and what could be the impact? अरे वाह, बराबर. I am really sorry, I won't be able to comment on this issue. Regarding the price to book value, I was just digging up some data, and allow me to share that with you. Just using one example, बाकी सबका भी वही है. नहीं छोड़ो ना, it is I versus Bank of America का price to book value was 0.23 in 2012. 2016 में 0.45 था, 2020 में 0.67 था.
इन्होंने जो 2003 से लेके 2008 में जो हाउसिंग बबल में कांड किए है ना, ए टू जेड अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एसेट सर आप क्वालिटी बहुत इम्पेयर्ड है। नहीं तो आप उनका इंडियन बैंक्स के साथ कंपैरिजन फेयर नहीं होगा प्राइस टू नहीं बुक नहीं वैल्यू फेयर है, फेयर है। इंडियन बैंक वो कोई सोना नहीं बनाता है, वो छोड़ो यार। सी यू डीड सो मच। पर ये जो डिफरेंस है ना प्राइस टू बुक वैल्यू में 15 साल से मेंटेन्ड है, तो ये आज की कोई नई घटना नहीं है। अरे प्राइस टू बुक 15 साल के बाद में ही होता है कांड। Realization dawns only after 15 years. See, this is my view. You agree, well and good. You don't agree, well and good. But I am saying 110% HDFC का book value 1 के नीचे आएगा 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 आएगा. No bank can remain above 1. That is the normal international standard. Now, if India is different, as such India is different. Atmanirbhar. ये है वो है नॉनसेंस है। 15 साल के 20 साल के बाद में, लेकिन आएगा जरूर। वन टाइम बुक, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, एंड दिस इज माय व्यू। आई कैन बी रॉन्ग, दैट्स इट। Okay, sir, just 1 second. I think we have Parth, who is a family office guy with Pidilite, so he would like to share some insights. Let us listen to him. Thanks, Abhishek, and thanks, Sharad Bhai, for giving me an opportunity to speak. So I think, by and large, from what I've been listening, I think I agree with a lot of views that market is bearish. In the sense, if you take, macro point of view, rate hikes aega, liquidity suck in hoega globally, so I think, markets will continue to remain bearish. 12,000 jayega ke nahi, I think it's a little steeper correction that we guys are expecting. But I think one contrapoint, Sharad Bhai, I would like to make on the banking space that you've said is, if you look at Goldman Sachs, if you look at JP Morgan, they are not lenders by any scope of thinking. जैसे HDFC बैंक का मेन बिजनेस आज लेंडिंग है, तो आई डोंट थिंक JP Morgan and Goldman Sachs का आज प्रॉफिट्स लेंडिंग बिजनेस से आता है. So it's not fair to compare one JP Morgan and Goldman Sachs because वहाँ पे growth in lending इतना है नहीं जितना उनका investment banking division contribute करता है, right? So that is one way to look at it, and also the kind of growth that HDFC and HDFC Bank, both of these twins, have been giving on a very large asset base is commendable. So I think in the short run, I think the markets would correct, but I think if we have a 5-year view, then I think Indian markets will continue to outperform. And I'm saying I 100% agree that 2 quarter to pain rahega. I don't know how much the markets will correct, but I'm very confident the market should correct because FII flows are -1, and I think globally liquidity to suck out hoga. So I think markets will correct. But again, I'm saying a lot of these spaces, Titan, I'm not very sure, right? But IT will also continue to grow. There are so many spaces in IT. So 40p is not expensive for me if a company like Mindtree is growing at 30% EPS for the next 5-6 years. So from that point of view, I think 5 years point of view, I think the market is bullish. See, I'm not an astrologer that I can see 5 years down the line. I don't know whether you are an astrologer or not, because how it will unfold, how rupee will unfold, how inflation will unfold, I don't know. And it's too, see, this is the mistake that generally people make. They tend to extrapolate things. You cannot in equity markets. If Google was at 2,900, people extrapolated to 3,900. So I'm only saying is, okay, I might be wrong. You can compare HDFC Bank with Wells Fargo or any other bank, not with JP Morgan. Okay, I get your point, but you are not getting my point. Boss, this is impossible. What went on for 15 years under the leadership of that gentleman, वो नाम भूल गया उसका, वो जो AMD था, Aditya Puri. Aditya Puri. It's not going to happen. He was managing the books. Why don't you see? I'm a skeptical guy.
everything for me is skeptical. And your company, Pidilite, mark my, it is being run. 100% it is being run. It's not natural. So I'm skeptical. You will have to take things with a pinch of salt of what I say. You compare HDFC Bank with what? You compare HDFC Bank with Wells Fargo, City Financial, or First Finance in US, and look at their financials. Why forget JP Morgan, forget Goldman? But sir, why don't you understand that 11 months ago, 12,000 was the highest ever index reached in India. Now you are saying, I doubt whether it will be 12,000. Why? What is so good? I think index will be 7,000, 8,000 now. Because dollar rupee, inflation, interest rate, and first of all is government finances. They are screwed up to whatever level you can say. It's just that I'm connected with the government, but it's bad, really bad. In such a scenario, how can you have a roaring bull market? Please. See, I'm not saying you agree with me but at least some points you will give me something, some credibility. 100%. So, Saraji, I think one more point, and then I'll let others take over. So it's always that bull markets are up the stairs and bear markets are down the window, and this process I think is expediting. To your point, I think this process of bull markets being faster and bear markets being even faster is expedited, and the kind of VIX non-spike that we are seeing, India VIX is still at 2021. Please correct me if I'm wrong. So कोई भी panic set in नहीं हुआ है अभी market में, and till panic sets in, I think नहीं पात भाई, अब पैनिक आएगा ही नहीं. इंडिया में पैनिक आएगा ही नहीं. Everybody is fully paid money with. मतलब सब लोग के स्टॉक फुल्ली पेड है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा. और शरद भाई, कल सवेरे मार्केट में लदना है, so it was good to talk to you all. I'll take your leave. Good night, everyone. Good night. Thank you, sir. So, Path bhai, I'm also as such bullish only, but for the moment, I'm very bearish. And you don't see my point. Believe me, Path, you will be surprised after 5 years. If I am alive, I don't know. But HDFC Bank will see such lower levels you will not have imagined. 10 करोड़ वायदा खड़ा है, 10 करोड़. Who is going to take that 10 crores? और 10 दिन में 20 करोड़ हो जाएगा, फिर कौन लेगा उसको? तो I'm not scaring you, but Sharad bhai, I things want. are difficult. Yes, please. Anybody? Yeah, Sharad bhai, I just want to add a few points. Yes. See, people ask me, is it a bull market or a bear market? I've been telling them it's a bear market on the simple thing of lower high, lower low. Simple. I just look at the chart and say, where is the price doing? But people keep arguing, saying that, India is a growing economy, then we'll become world leaders and we'll do all blah, blah, blah. So I only ask them only one question, that I first define this not at a bear market, not as a bullish market. I believe it's a bulls market. Why do I say it's a bulls market? Is because there are any number of people who want to pour money into the market, and they're pouring, and they've been continuously pouring since, let's say, March 2020. So what happened between March 2020 and September 2021 was, when the bulls poured money, the prices went up. But subsequent to October 2021 till now, the bulls continue to pour more and more money, but yet the prices are coming down. We all talk of, the theory Bhav Bhagwan Che. If Bhav is Bhagwan Che, where are the prices today vis-a-vis what they were about 6-8 months ago?
The money which has come into the market is enormous. Retail money is enormous. There is no sign of any bearishness among the retailers' minds. That's why they're putting money. The SIPs have only increased, but the prices are telling you something. Prices are significantly lower than what they were in September of last year. Now, you may argue with the index. I have a separate section on that. But before that, just I would like to say, most stocks are much lower than what they were in October. And people have poured much money in those stocks since then. So if you're not able to see reality where you have put money in Zomato at between 130 to 140, which it was for 4 months, now you are seeing it is at half price and more. And if you still feel bullish and put more money, then what can one say about it? One has to look at reality. The reality is telling you, the price is telling you, I want to go down. Whatever money you put, I will go down. So if you are saying, no, we are still bullish, we are looking at 5-year time, then I think we have to question ourselves. 2-3 points I want to make, Sharad Bhai. I don't know, maybe a little longer, but still. Talk of HDFC Bank, people talk of this as the bank, or let's say, it is always doing well. Take 2008. Now, 2008, all of us talk of why there was a global financial crisis, because of subprime and because of Lehman Brothers. You talk to anybody, they will talk about it, even if they're not participated. You and me have participated in 2008. Now, what was HDFC Bank's moves in 2008? So, if global financial crisis of Lehman Brothers or subprime or whatever, it should not have affected India. It should not have affected Indian stock market. It should not have affected HDFC Bank, which was doing very well. HDFC Bank at HDFC fell 60%. 60% it fell. US market, Dow Jones, fell 54%. Indian market fell 65%. Why did we fall 65%? Because there were no buyers. Whatever HDFC Bank may do in terms of fundamentals, maybe grow, may show better results. And in 2008, if you go back and see, the earnings per share of the Indian corporate sector never fell. Never fell. Yet we fell 65%. So there is a huge difference in trying to understand what fundamentals is and what money flows do. Money was sucked out of HDFC Bank, Asian Paints, number of blue chip companies. There was nobody to buy. So whatever may be your fundamentals, it means nothing when somebody does not want to buy a particular share. So final point I want to make, where people say, okay, fundamentals will improve. We have seen highways, we have seen growth, and this is the kind of thing. I came into the market in 91. In 92, we saw Sensex at 4,500. Now what happened after that? 93, we had the a little time I'll take, Sharad Bhai, but I'll just want to make this larger point to people who have not understood this concept. 92, you had Harshad Mehta scam, Sensex 4,500. 93, for the first time, you got the private sector mutual funds for the first time. 94 was the first time FIS came with Morgan Stanley. Then you had 94, you had National Stock Exchange coming up. 95, you had internet coming up. And then you had your cell phone coming up in 95. 96, you had the first foreign cars coming up. Then you had the NSDL coming up. Then in 97, you had, not 98, you had the F&O starting. So 2000, you had the highways coming up. And you had the cell phones, which became democratized. Everybody started owning a cell phone. In 2000, 2001, 2002, you only had positivity one after another. You had free pricing in that decade. From between 92 and 2004, of 12 years, you had such fantastic reforms. You had 97 budget, which was considered a landmark budget because it took care of the taxation in just 3 levels. There was generally peace and harmony in that particular in that decade, excepting the Babri Masjid of 92. So in that decade, when you had so many new things coming up, including DMAT, which came up, you had new private sector banks coming up. HDFC Bank came up in that. So in 95. So what was Sensex on April 2nd, 1992 was 4,500. What was Sensex on May 18th, 2004? 4,500. For 12 years, if you had, let's say, bought Sensex future, let's say 92, in 2004, you would still be at the same level. So if you simply look at fundamentals, if you look at some big things are happening, we are doing Atmanirbhar, we are doing that, this,
it will not count for anything if there is no money in the market. The liquidity is fast going off because the smart guys are moving out of the market. If you are saying, no, I will match FIIs, nothing has happened, so many months they have been selling, and yet the market has not gone down significantly. If you think like that, you have to only look at 2008. Between 2007 September to May 2008, FIIs sold about 1,60,000 crores, sorry, not like a huge amount, which was equivalent to about 2,24,000 crores of current this one, because Sensex and Nifty were one third of that. Till May 1st of 2008, if you go and check up, Nifty was 5,000. And if you look at 10 months before, that is when the FI started, the Nifty was 5,000. So a lot of people argued at that point of time, saying, oh, we have been able to manage FI selling. They sold left, right, center, October, November, December, January, February, March, April, and we are still at 5,000. Then what happened between May and October? Since Nifty fell to 2,250, 48% fall. So there will be something called a tipping point. We don't know where the tipping point is. So when the tipping point happens, unimaginable things happen. Nobody would have thought Nifty will fall 65%, or from 5,000 on May 1st to 2,250. It has happened. We have seen this happening. And our Indian economy was performing well during that time. Liquidity is very important. The smart guys are moving out. The dumb money is coming in. So if you're not careful, if you're not looking at, when you look at charts, these are the things you should see. What happened in 2008? What happened in 92? What happened in 2004? You don't have to draw some lines and Fibonacci and that and this and all. Simple fundamental data, which on cash flows, if you see in inflows and outflows, we are in the same situation as we were on May 1st of 2008. All of us are feeling proud that we have beaten FIS. FIS sold, we have observed it. But kindly go and see between May 2008 and October 2008 what happened. So that will give you some sense of history. And they say those who forget history are condemned to repeat it. I would be very, very careful in how I put my money and how I put my thoughts into the market. Thanks, Sharad Bhai. Well said, well said, well said. Very well said. Himani ji, आप बोलिए. Sir, I want to say something on banks, if you allow me for Yes. 2 to 3 minutes. सर अभी जो बात हो रही थी फॉर बैंक्स वैल्यूएशन ऑफ जेपी मॉर्गन, वी वर डिस्कसिंग अबाउट जेपी मॉर्गन एंड वेल्स फार्गो एंड ऑल दिस इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ओके, अभी एचडीएफसी लिमिटेड and HDFC Bank had discussed this said about merger. अभी HDFC Limited controls 74% of the home loan market in India as of now. अभी जो भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, जैसे पीएसयू बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. पीएसयू बैंक्स गिव लोन ऑन द जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है. जैसे मैंने आज स्टैम्प पेपर 40 लाख का बनाया था, 40 लाख के ऊपर 85% विल बी द लोन वैल्यू विद द पीएसयू बैंक्स विल गिव टू द कस्टमर्स. प्राइवेट बैंक्स क्या करती है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जो भी है, वो मार्केट वैल्यू का 80% और स्टैम्प पेपर का 150%, दो में से जो कम होगा वो देंगे. तो मार्केट वैल्यू जनरली ज्यादा ही होती है बिकॉज द स्टैम्प पेपर कॉस्टिंग विल बी अराउंड 50-60% ओनली. तो आज के दिन में जो भी वैल्यूएशन है, अभी आप मार्केट देख लो, पूना, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सभी जगह में देयर इज अ डिप्रिसिएशन इन द लैंड प्राइसेस ऑफ फ्लैट्स एंड जो भी टाउनशिप्स जो बन रही है. एपीएफ बोलते हैं. एपीएफ में आप कभी भी देखोगे, एपीएफ माने जो भी प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में एवरी बैंक विल बी सेइंग कि भाई मैं उसमें अप्रूव्ड लेंडर हूँ. एसबीआई, एचडीएफसी विल बी द टू मेजर बेनिफिशियरीज. जैसे कोई भी प्रोजेक्ट 500 फ्लैट का बन रहा है, तो एसबीआई एंड एचडीएफसी विल बी द लेंडर्स कि भाई मैं यहाँ पर कोई भी आदमी लोन लेता है, फ्लैट लेता है, तो उसके लिए मैं लोन अरेंज कर दूंगा. तो दिल्ली में फॉर एग्जांपल सुपरटेक का 50,000 फ्लैट्स अगर प्रॉब्लम में आता है सुपरटेक, और वहां पर किसी ने लोन लिया है, 1000 फ्लैट में लोन लिया है, 50,000 में से 1000 आदमी ने लोन लिया है, तो आदमी ने लोन चालू रखा है बट उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है. तो द एंड रिजल्ट विल बी एचडीएफसी लिमिटेड विल बी लूजिंग बिकॉज उन्होंने तो पैसा दे दिया बिल्डर को, बराबर है. अभी इंस्टॉलमेंट लेना किसके पास से, इंडिविजुअल आदमी के पास से. तो वो जो कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा ना, अभी नो वन इज सेइंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स
क्योंकि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं, साथ में वो प्रोजेक्ट्स फेल शुरू में नहीं हो रहे, चालू होने के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद उनको लगता है कि बिल्डिंग अभी जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल का वो हाई हो रहा है, सीमेंट प्राइसेस अप हो रहे हैं, तो उनको उन्होंने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया था कि भाई इसमें प्रॉफिटेबल रहेगा लॉन्ग टर्म में, वो कुछ हो नहीं रहा है। तो 1.5 साल तक उस आदमी ने, कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट भरा, बट 1.5 साल के बाद पता चला कि सुपरटेक तो उसने तो बोल दिया कि भाई अभी तो मैं आपको कंप्लीट करके नहीं दे पा रहा हूँ। तो उस हिसाब में एचडीएफसी लिमिटेड तो इट विल बी द थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको न तो फ्लैट ले सकता है, न तो वो वहां पर जाके वो बोलेगा मेरे को सर आप इंस्टॉलमेंट भी दे दो। तो ये जो चीज हो रही है ना, वो इट विल बी ह्यूज बबल विच इज कमिंग, जो फ्रेडी मैक और फैनी में हुआ था 2008 में, वही हो रहा है। क्योंकि एक आदमी ने लोन लिया, उसके ऊपर वो पैसा लिया, उसने शेयर बाजार में डाला या दूसरा प्रॉपर्टी लिया, जो 2008 में हुआ था, द सेम थिंग इज गेटिंग यहाँ पर धीरे 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 करके, जो क्योंकि मेजर सिटीज में अभी हो रहा है, अभी छोटे सेंटर्स में भी वही हो रहा है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे। और पुराने में स्टील का भाव इतना बढ़ गया है, सीमेंट का भाव 230 वाला 330 340 हो गया है, स्टील का भाव 6,000 रुपये टन 7,000 रुपये टन हो गया है, क्योंकि उन्होंने चालू किया था 3,000 में। प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी 3,000 का 20% हाई करेंगे, थोड़ा 100% हाई करेंगे यूक्रेन की वजह से। तो ये सब चीज अभी सर कोई बोल नहीं रहा है, और सबसे ज्यादा डिलीक्वेंसीज जिसका सबसे ज्यादा शेयर है उसको ही लगेगा। 74% मार्केट शेयर है आज के दिन में एचडीएफसी लिमिटेड का, और उसको ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। सेकंड थिंग, क्रेडिट कार्ड डिलीक्वेंसीज सुपर सुपर अभी चल रहा है, क्योंकि 25% 30%, आप 10 आदमी को ले लो, 10 आदमी में से 7 आदमी ने क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं भरे होंगे, नहीं भरे होंगे, नहीं भरे होंगे। सबसे ज्यादा उसमें लॉस होगा एसबीआई और आईसीआईसीआई का। वो अभी कोई डिस्कस नहीं करे, वो सब आएगा न्यूज बाद में, जब इनके पास हो जाएंगे 400, एसबीआई का हो जाएगा 200, जब तब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देता। ये लोग दे विल नेवर डिस्क्लोज दिस थिंग इन द बैलेंस शीट सर, नेवर नेवर एवर। वो सब वो ओवरऑल लोन जो होता है वो 0.95%, 0.8% नेट एनपीए, बट ये राइट ऑफ का कोई बात नहीं करता। भाई हमने इतना राइट ऑफ किया लोन, एसएमए में इतना गया, एसएमए टू, आप तो सीए हो सर, आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड में मेंशन, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं 1, 2 and 3, दे नेवर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट सर। बस दैट्स इट सर, थैंक यू। The gentleman from Pidilite, he made a point that HDFC Bank is super special bank, but the Bank of America is a retail bank. It's one of the largest. It's quoting at 0.8. Check up. Sir, So sir, Bank of America and JP Morgan, they control the SWIFT arrangement of all the banks worldwide. forgetting all that. He was saying HDFC Bank is different from the JP Morgans and all. Yes, he is right. But what about Bank of America? What about Wells Fargo? तो ये सब सी आपके दिमाग में घुसा दिया है कि ये अच्छा है, बाकी दुनिया बर्बाद है, इंडिया भारत महान, बाकी सब बेईमान, यही आपको सिखाया गया है, यही आप मानते चले आए हो, और ये बहुत भारी पड़ेगा। ये नैस्डैक जो है ना, ये कितना भी पुल बैक आवे, कितना भी वो पुल बैक आवे, वो 500 पॉइंट से ज्यादा नहीं उठ सकता है। इट्स गॉन, इट्स ओवर। तो ऐसा हालत में टेक्नोलॉजी बोलते एलटीआई ना माइंड ट्रीट 700 रुपये हो जाएगा। काय का एआई टेक्नोलॉजी ना, वो सब नॉनसेंस है सब। सी आपको पट्टी पढ़ाना है मेरे को, इसमें ये है ना, वो है ना, वो है, कुछ नहीं है, खाली धोखा है। एक सी पहले जमाने में ये क्या होता था, रूपांगी इंपैक्स, फेमनॉर मिनरल, ऐसा सब फालतू कंपनी आता था, और सब अभी क्या है, ये कंपनियां अच्छा है, लेकिन भाव उसका 5 टाइम 6 टाइम बढ़ा देते हैं। तो उससे आपको बचना है, संभलना है।
So there's one thing I would like to add to what Samar said. एक मिनट अभिषेक, I just want to leave एक point बोल देता Sure, हूँ. sure, go ahead. बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और जेपी मॉर्गन कंट्रोल्स 100% ऑफ द स्विफ्ट, यानी जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, उनका प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड पूरा. जेपी मॉर्गन एंड बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कंट्रोल्स द टोटल कंट्रोल ऑफ दिस स्विफ्ट मैकेनिज्म. आज के दिन में रशिया चाइना ने खुद का मैकेनिज्म निकाला है फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ देयर इंटरनल थिंग्स, बट स्टिल दे आर नॉट एट पार विथ जेपी मॉर्गन एंड बैंक ऑफ न्यूयॉर्क. तो जैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में वीजा मास्टर कार्ड होता है, दे आर द प्लेटफॉर्म्स बाय विच वे यू डू द ट्रांजेक्शंस. तो आज के दिन में आपको कभी भी कुछ भी भेजना है डॉलर, तो यू हैव टू सेंड द इंटरमीडियरी बैंक विल बी इधर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और जेपी मॉर्गन. थर्ड बैंक है ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है. तो आप वो देखो वो कंट्रोल क्या करती है. तो एचडीएफसी बैंक का कुछ है नहीं अभी. आप वो मार्केट शेयर है जो भी है वो आपको पता चलेगा दो साल, बस 2 साल रखो, उसके बाद पता चलेगा. एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. थैंक्स. चलो आई एम लीविंग सर दिस स्पेस. थैंक यू. शरद भाई, नीलेश बोल रहा हूँ. कैन आई कम ऑन शरद भाई? Go ahead. हाँ, तो सब बैंक्स की बात कर रहे हैं, मैं एक कोटक बैंक की बात कर रहा हूँ. कोटक बैंक ने अभी जो रिजल्ट परफॉर्म बताया, वो कैसा भी रिजल्ट आया, लेकिन प्राइस ने उसको रिजेक्ट किया है. तो इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी हम लोग कर सकते हैं. जैसे शरद भाई बोल रहे हैं, 1830 का जो हाई बना था, तो 1820 का कॉल बाय कर लिया और कोटक बैंक को हम लोग ने बेच दिया. आप देखेंगे लास्ट 8 महीने से या 10 महीने से 1700 और 2000 की रेंज में ये कोटक बैंक चल रहा है. और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, LIC का वो लीड मैनेजर है. 15 तारीख के बाद या 16 तारीख के बाद LIC का लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद कोटक बैंक कोलैप्स हो जाएगा. सब लोगों ने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक सबकी बात की है. कोटक बैंक को किसी ने नहीं बोला है यहाँ पे. तो आपकी विशेष टिप्पणी जानना चाहूंगा शरद भाई इसके ऊपर. ये छोड़ दो, कोटक और वो सब टाइटन बेच दो. खाली मगजमारी क्यों करने का है? अपने को पैसा कमाने से मतलब है. Sharad bhai, Vishal is on the show. I request you to invite him as a speaker. Thank you. Yes, I'll do that. Meanwhile, let's just take Dr. Dheeraj, who's a biotechnologist from New York. He would like to add something on the biotech space. Yeah. Are you there? Oh, hello. Hi, how are you? Thank you for. I was listening to you guys. Very nice, very deep insight. So, just a quick background. I'm a physician, but I do biotech analysis as well for different companies, especially the ones which were attached with COVID, Moderna, Pfizer, BNTX. So, we did a lot of work. I'm also an investor, and to be honest to you, I think whatever आप जो भी बातें इधर कर रहे हैं, that makes a lot of sense. क्योंकि I think Mr. Sharad, I heard him about biotech sector. That's why I thought I should speak. He's absolutely right. जो evaluation biotech sectors की थी, because I am involved in that, is unheard of. The leading companies in the biotech sector, especially the ones which I can't name them because of privacy issues, but there are many companies which are forefronts for next 5 to 10 years. If you talk about genomics, gene editing, remote monitoring, and it's not hidden, the companies I'm talking about, they were the market leaders and they were growing very, very fast. अभी भी उनके numbers बहुत अच्छे हैं, but people are not ready to buy forward earnings. The story has shifted already a year ago from growth to valuation, and now the valuation is also oversold. So in biotech, it's really, really hurting. And the second area which is hurting the most is the regular growth sectors, which is EV market. Different companies. Again, I'm not an analyst in that, but I have very close friends who work for them. For example, companies like NIO, which is a Chinese EV maker, Arrival, from $28, it's at $2 now. Excellent company. I can name few other, but there are many companies. Same goes with electric vehicle charging stations companies, ChargePoint, EVgo, you name it. Look at their valuation, where they are sliding. So the free cash flow has gone from the market, which is the oxygen for these growth companies, and they have hurt like anything. People are hurting like anything, and now
big companies like an excellent company. I'm in myself invested Google. It's an excellent company because I do understand the AI in healthcare. They are working in that subsector in artificial intelligence, remote monitoring in healthcare. Excellent companies, excellent healthcare prospect. Same thing goes with Facebook. And I do work with metaverse analysis in healthcare. They're very heavily invested. But again, the oxygen has been sucked out, and now you're seeing they have already crossed the oversold valuation. So now it's absolutely true. A lot of retail people still are very, very bullish. They are buying these things, but big investors are sliding away. They are taking the pain, selling off, and waiting with the cash. So cash is the I myself, personally speaking, I'm heavily invested. I was invested in the companies you were naming. I did bought BlackRock, JP Morgan in 2020 March, Wells Fargo. They did a very good run. Same thing with Moderna and BNTX, and now things are sliding down. But it's very painful to see companies which are taking human race in future. And same goes with space mining, asteroid mining companies, how they are hurting. Same thing with carbon trapping companies. Same thing with solar companies. If you look into them, which was a biggest portfolio when Biden came, which he was propagating, and we were expecting a lot of growth there, and again it's not going along. And the other area which I would really like to point out, some of you guys are, I think, way better experts, is the fintech area, including PayPal. Look what's happening to them. It's very hurting, and all of us know $5 trillion were ingested in the US economy during the to be specific, during April to, I believe, March to August 2020, and then actually, yes, and from March to July 2020. And the bulk of them went to basically airlines, hospitality, mom and pop shops, restaurants, hospitals, local government, schools, and all that money actually has been shifted now. And a lot of people invested using Robinhood. And now look at the Robinhood stock itself. It's a no-brainer. It's a good company. It's selling below even its book value. So this is a very, very uncertain worldly time. Talking about macroeconomics, nuclear threat is real. Oil and gas, everybody knows where it has shot up, and we don't see anything immediately relief coming to the market. So definitely few quarters of pain are there, but people who are bullish, they understand the fundamentals. They believe for 5 years. I think this may be a good time to re-evaluate your portfolio, relook into what you believe in actually. What story do you believe in? And like somebody really nicely said, you really have to look at the valuation of the company. A lot of companies were super overhyped, and some companies are very undervalued right now. So if there is a quality company, the valuation is excellent, the growth story matches your story, and definitely there is a risk. I'm investing at this time. I know there is a small, I do anticipate another 20, maybe 25% downside, but nobody can predict the bottom. I think you have to be God to understand where the bottom line. But definitely the sentiment is negative right now. So good luck for all the investors, and it's a pleasure listening to all of you. So thank you for sharing your views. Dr. Deer, Dr. Deer, Dr. Deer, hello. हाँ सर, बोलिए बोलिए। वो जो मैं बोल रहा था कि things are available at book value, biotech and all that. It's correct or not? No, it's correct or not? Absolutely. Very, very rightly said. And not all companies, but a bulk, a very... Yeah, some. Yes. And Google is available at 17p. Am I right? I bought Google on Friday, so I won't speak more. Yes. Google is an... No, you forget you bought or sold. Is it available at 17p, 16p? Yes, it is. So my point was, if things are available like Google at 15, 17 PE, why the Indian market should be quoting at a higher valuation? That was my limited point. I think that's an excellent point. And again, the investor has to assess if the foreign investors are looking at growth somewhere else more than the US. At some point, the tipping point will come when they will feel that things are super cheap and they will sell out and reinvest. So that's happening as we speak. And we anticipate that third markets, more and more people will pull out. And when Mr. Sharad pointed out about biotech, I have seen this phenomena happening already. Like people are selling good companies. I'm talking about South Korea, I'm talking about Japan, I'm talking about even China. I mean, China is a very different ball game because of geopolitics. But people are selling and buying into biotech. People are buying into energy, clean energy, solar.
because they are, like he said, even below the book value. So this is phenomenal times. It's unheard of. Nobody anticipated. I myself am super down. I have hundreds of friends who are like negative millions of dollars. So it's a painful time. No, or I have another take is how if the book value is wrong, then it's a different ball game altogether. Then you are big time screwed. Yep. I think that would be the case. So Anyway, that's a different just a few story. thoughts on the US markets कि वहाँ पे जो लेवरेज का सिस्टम है ना, तो यहाँ पे अपने जैसा लॉट साइज होता है कि मान लो कि रिलायंस का इतना हुआ, टाइटन का इतना हुआ, या कोई स्टॉक का इतना हुआ, वहाँ पे एवरी स्टॉक हैज 100 लॉट साइज, नो मैटर इफ इट्स $10 Yeah, स्टॉक or it's $2,000 स्टॉक. तो अभी अगर आप सोचो कि अब बस अमेजोन का ही एग्जांपल पकड़ लो, ठीक है, तो वो चल रहा था 3,500. तो द काइंड ऑफ लेवरेज दैट यू गेट, एंड आई मैनेज टू बाय एन ऑप्शन, आई थिंक अबाउट 15-20 days back, very far dated, for about $1,500, and that was a 3,000 put option. So the kind of leverage that you can use in the US market, I don't want to reveal, but हाँ ये है कि that could have a cascading effect on the opposite side as well, because once these option buyers run out of money, especially the call option buyers, then it will have a cascading effect on the downside. And as far as valuations go, and जो Google है, अपना Berkshire Hathaway है, even Berkshire Hathaway also has fallen quite a bit from the top, and that is how our Mr. Indian has become richer than Warren Buffett. So these are big guys selling. Any small guy cannot sell Berkshire Hathaway, or they cannot sell Amazon. कि एक एक शेयर तुम्हारा होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में. तो दैट इज वन डाइकोटमी जो इंडियन और यूएस मार्केट्स में है. एंड वैल्यूएशन वाइज, Abhishek, just want to add to that point which you just mentioned about Berkshire. Yeah. See, at some point you want to get out of that safety net of yours of Berkshire or Amazon or Google or you name it, right? Or Apple. You want it becomes so attractive. Those growth stocks, the valuation is like Mr. Sharad was talking about, below book values. At that time, you say, you know what, boss, I'm gonna take a 10% shot at it. I'll put a level, and if it hits below that, I'll exit out, and I'm ready to take that 5% off or 10% loss there. So that's the story which is happening for last few weeks. Slowly, you are seeing people exiting, safe havens of mega caps, of fangs, and you name it, and they are coming out and taking slight risk. And that aptitude, that delta is increasing as we speak because it's becoming more and more attractive. no, but just look at the kind of selling that's happened. Okay, so Amazon, as far as I've seen the numbers, I think the major hit was because of the investment in Rivian, which happens to be an EV manufacturing company. Correct. And this was the one second. This is, let me just complete. So Rivian was the company which had some massive losses, and then so what the market is picturing right now is that whatever demand they are anticipated in terms of the e-commerce, that's the biggest e-commerce company in the world. So as in how the lockdowns are coming off and the inflations are hurting margins, the demand might not sustain, and even you have inflation that's adding fuel to the fire. That's the bottom line, and that has to get repeated in India as well, and that's going to happen. So all these Titan also, if you see, just as an example, you have it as so the margins of Titan even in this quarter has to reduce because gold prices have gone up, and this has happened everywhere. So this is just a few examples, and yeah, please go ahead. Abhishek, just want to add on Rivian. That's another area I'm invested in. But just to let you know, it came out at $150. Now it's at $28. Ford has a big stake on it. And this Sunday, the post-IPO lockdown period is expiring. So you'll see a lot of stocks coming out and people selling their Rivian maybe this coming week. Hopefully that's not the story because, like I said, I'm an investor. But it's something we are anticipating. Thanks, doctor. Let's take Rajiv ji. Rajiv Malik. Hello, am I audible? हाँ. नमस्कार शरद भाई और ऑल द फ्रेंड्स. पहले तो मैं शरद भाई को आज बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि अचानक शाम को मैंने उनका मैसेज देखा जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी स्पेस जो है वो 3 दिन होगी. एंड
शरद भाई बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इट हैज बीन ए सुपर सक्सेस और इतने सारे मतलब वी गॉट सो एनलाइटेंड लिसनिंग टू सो मेनी स्पीकर्स ऑफ सच हाई एमिनेंस। एंड शरद भाई, शब्दों की मर्यादा का महत्व हमें जरूर समझ आना चाहिए। मुझे भी कल समझ आ गया था जब आप वहां से चले गए थे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द वर्ड्स वी यूज फॉर पीपल, यू नो, एंड दैट दोज वर्ड्स, उन शब्दों की मर्यादा ने आज एक नई स्पेस को जन्म दिया है। तो मैं उसका स्वागत भी करता हूं और आपको नमन भी करता हूं। अब रही बात जो मार्केट की सिचुएशन है और जो सारी बातचीत आज हुई है, बहुत कुछ हुआ है इसमें। मैं सिर्फ बहुत ब्रीफली कुछ पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंटर्स या पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स और जो यहाँ की इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी है, उसके ऊपर सबसे बड़ा फ्रॉड तो पेटीएम का जो हुआ है, ये आईपीओ। आप तो एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ जिसका कोई बिजनेस मॉडल या कुछ समझ आ रहा है। वहां तो साफ बोला गया था कि भाई ये 15-20 साल तक कोई पता नहीं इसको इनकम होगी कि नहीं होगी, और कुछ लोगों ने इस बात को कहा भी, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं था, कोई समझ के राजी नहीं था। जैसे शरद भाई आज आप कह रहे हैं, तो लेकिन वो बात ऊंचे लेवल की है, तब मार्केट का लेवल हायर था। लेकिन वहां पे भी बिना सोचे समझे, मतलब ये बिना सोचे कि ये क्या पी लेवल है, क्या इसकी फ्यूचर का पोटेंशियल है, वो खुद कंपनी अपने उसमें कह रही है। इसमें कुछ मैं शरद भाई ये भी कहूंगा कि अब जो आज आप बातें कर रहे हैं, ये हमारे जो मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, जिनको देख के आज हमारे इन्वेस्टर और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं। वहां पे शरद भाई जो जिस लेवल की डिस्कशन आज आपकी स्पेस पे हुई है, इस लेवल की ना तो वहां फ्रीडम है, ना वहां डिस्कशन हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सुन के और आपकी बातें सुन के, मैं जरूरी नहीं कि आपकी देखिए हर बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात से तो मैं सहमत हूं कि ये बहुत ही डेंजरस और भयावह सिचुएशन है कंट्री की, कि जहां पे एक पेटीएम को इस लेवल पे बेच दिया जाता है, और हमारे जो टीवी चैनल्स हैं या मीडिया है, वो जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से उसको नहीं बताते, इन्वेस्टर को एजुकेट नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा शरद भाई साहब, आपने एक्सिस बैंक के स्कैम को इतनी इंपॉर्टेंस दी। मैं समझता हूं इससे महा बड़ा स्कैम था जो एनएससी में हुआ है, जहां पे कोई एक योगी कह के, मतलब क्या तमाशा है, इतनी बड़ी हमारी एक्सचेंज जिसका लाखों करोड़ों उसका टर्नओवर था, और वहां पर मतलब कितना, मैं समझता हूं कि ये मार्केट तो उसी दिन गिर जानी चाहिए थी। वो कोई कम स्कैम था शरद भाई, आप जरूर उस पर अपने विचार दीजिएगा। और जहां तक ये एक्सिस बैंक है, ये तो साहब अभी तो ये म्यूचुअल फंड है, ये तो नोटोरियस है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम भी इसके यहाँ बहुत हेरा फेरी हुई थी, क्या हुआ उसका? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, उसके पास एजुकेट होने का तरीका नहीं है। उसके पास जो टीवी का मीडिया है, ये जो चैनल्स हैं, और वो खुद आप देखिए उनके यहाँ लोग कुछ बोलते हैं, अगले दिन बेचते हैं, क्या करते हैं, उसमें खुद सेबी और उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अडानी ग्रुप के शेयर्स ऐसे भागे जा रहे हैं ऊपर, तो कोई ये समझने सोचने को तैयार नहीं कि क्या हो रहा है। फ्रेंजी है, मोमेंटम है, कितनी फ्रॉथ है। तो शरद भाई साहब, ये बात भी सच है कि 7,500 से 18,200, 300, 400 तक मार्केट गई थी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो रॉन्ग साइड पे हमको नहीं रहते हुए फिर भी हमको सजग तो रहना है। लेकिन ये देखिए एक बड़े ये टर्म्स जो मार्केट के बने हुए हैं कि अभी कल को रैली आ जाएगी तो ये बोलेंगे जी ये तो
बुल मार्केट की फिरोशियस रैली है, फिर ऊपर से जब नीचे फॉल आएगा तो बोलेंगे ये तो बियर मार्केट में या जो भी ये अपने टर्म्स यूज करते हैं कि ये जी इसलिए फिरोशियस फॉल आ गया है। तो लेकिन जो डिबेट, डिस्कशन, एजुकेशन, अब मुझे ये बताइए शरद जी, काला दिन होगा हिंदुस्तान में अगर ये 12,000 के 12,000 के लेवल पे आ जाए। हमारा इन्वेस्टर जिसने बेचारे ने, जो हमारे यंग यूथ जनरेशन है हमारी, उन्होंने जो अपने खून पैसे पसीने की कमाई लगाई है, उनके लिए ब्लैक डे नहीं होगा सर? कितना चीटिंग है सर उनके साथ। शरद जी थैंक यू वेरी मच मुझे बात करने का मौका देने। मैं बोलता हूँ, नहीं आप सुनते ये मार्केट है, बायर बीवेयर, बायर बीवेयर, बायर को हमेशा बीवेयर रहना चाहिए जी। वो सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी करे, अपने में अक्ल होना चाहिए जी। सो मार्केट वर्क्स ऑन दैट फंडामेंटल। अकल देगा कौन सर? ये प्रॉब्लम अकल देने का नहीं, अपना काम नहीं है अकल देने का। जी। मैंने कोई समाज सेवा का ठेका नहीं लेके रखा है जी। जो पैसा डालता है वो जाने, मेरे को क्या है। जब डाला था तो पूछा था, जब डाला था तब पूछा था, और तो अब मैं क्यों बोलूं उसको। और ये जो है ना कि यूथ, अरे मैं तो बोलता हूँ और मरे, क्योंकि न जान न पहचान न आना कुछ पाना, डाल दिया पैसा फॉर नॉनसेंस। तो वो भुगतेगा, सीखेगा, वो अगले टाइम अच्छा करेगा। मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ, ना मैं किसी की चिंता करता हूँ वो टीवी पे क्या बोलता है नहीं बोलता है, मेरा क्या लेना देना। मैं वास्तव में टीवी देखता नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, मेरे को क्या लेना देना है। मेरी जिंदगी है, मैं, मेरा परिवार, मेरा कंप्यूटर, मेरे दोस्त लोग, और 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 ट्विटर पे 5-6 दोस्त लोग हैं, वो मेरी लाइफ है बस। उसके अलावा मैं तो बोलता हूँ वो कल मरता है आज मरे, मेरे को क्या है। एक कड़वा बात है पर एक सच्चा बात है, सट्टे बाजार में किसी का भलाई मत सोचो। जो भी आता है आंख खोल के आता है, आंख खोल के मरता है। और रहा वो एनएससी का जो स्कैम है और ये एक्सिस बैंक, अपने वहां सब नपुंसक लोग हैं, नपुंसक लोग हैं। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये चलता ही रहेगा। और मैं खाली एक ही शब्द बोलूंगा, ये गवर्नमेंट भी बहुत ही खतरनाक है बस। चलो सर, वेरी वेल पुट टुगेदर। जस्ट वन रिमार्क कि पेटीएम का जब आईपीओ निकला था तभी इंडेक्स का टॉप लगा था 18,600 का। And I think we should try to wind this up. 11:55 हो रहा है. Another last 5 minutes. Let us just take one more last speaker and then call it. Abhishek, can I make a quick point? Hello, Mr. Sood, you can ask. Good evening, sir. Sharad sir, am I audible? Yeah. हाँ सर, जैसा आप बोला, यूथ सीखेगा। आई एम 37, ex Navy. Because of medical reason, I cannot join. So I had a lot of time to study. So while studying, I realized in 1970s, when inflation was as high it is today, WPI, CPI जो inflation है, it was as high, ये इतना inflation last time था 1970s में। तो जो अमेरिकन फेड चेयर था पॉल वॉलकर, ही टुक अप द इंटरेस्ट रेट्स एट 20% इन यूएस, और अभी ऐसा कुछ सीन है नहीं। सो माय व्हाट आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग इज, जितना आपका नहीं, सुनिए, आप 1970 में मत जाइए, वो 50 साल पुराना बात को आप अभी का बात कीजिए। वो हिस्ट्री इज फॉर रेफरेंस, इट्स ऑफ नो रेलेवेंस अदरवाइज।
मेरा खत्म होने वाला है. आई जस्ट वांटेड टू से इज कि इंटरेस्ट रेट हायर थे तो आपका पी वाज लो. The way the interest rates have gone down from say 1970 to 2020, we are practically at 0% interest rate. The PE is gone high. Don't you think कि अगर if the interest rate is going to go up, the PE of the market is going to come down? Yes, it will. It will come down. You are right. So चलो sir, सर where do you think the markets are heading towards? What do you think is in the next 16 to 18 months? What is your perspective about the Indian markets? As 6,000. 6,000. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you for your सर guidance. बस Vishal Kulu. Sharad bhai, we have been listening to all the bearish views from you and all the speakers, which I absolutely agree. But given that you will always have some strong sectors as well in a bearish market and weak sectors in a bullish market. So, especially one sector which is looking pretty strong is the cyclical, the sugar cycle, and the fertilizer sector. Fundamentally, I'm talking about, not on the technical piece. सर इसके ऊपर आपका क्या ध्यान बैठेगा, क्या व्यू रहेगा, और लुकिंग एट द ग्लोबल नहीं, पर्सपेक्टिव? मेरे हिसाब से शुगर यहाँ से आधा हो जाएगा. फर्टिलाइजर का तो 2-3 स्क्रिप्ट है, वो मालूम नहीं. और कौन सा बोला? सर बस यही दो सेक्टर था, शुगर एंड एक फर्टिलाइजर. शुगर का, यू रिमेम्बर दैट वो स्पेसिस आपने किया था? यस यस यस, विद राहिल. So I had asked a question कि 18 होगा तो क्या होगा? राइट, तो एब्सोल्युटली वो बोले स्टोरी खत्म हो जाएगा. करेक्ट. हाँ, तो 18 हो गया भाई. राइट, अंडरस्टूड. निकल जाओ रे. क्या F2 दबा दो कल. डन है सर, थैंक यू. आसान का. when हाँ, when नीलेश in भाई. doubt when in doubt have to enter. या ऑलवेज. हाँ, नीलेश भाई बोलो. शरद भाई, डॉलर रुपी जब भी ये 77.20 का ट्रिगर होगा, वहां पे बहुत बड़ा पैनिक मचेगा. ये मेरा रीडिंग है. आप क्या कहना चाहोगे सर? 77-20 बोर्ड पे आएगा. हाँ, तो वो ट्रिगर होगा, उसके बाद बहुत बड़ा पैनिक होगा. ये ऐसा मेरे को लग रहा है. थैंक यू सर, थैंक यू. स्वरंजीत भाई बोलिए लास्ट. नमस्ते जी. मैं आपका टॉपिक देख के व्हाट टू बाय एंड सेल कमेंट करना चाहता था और गेट योर सजेशन. मेरे को तो लगता है कि सेल करना चाहिए बॉन्ड्स जो हैं जो गिर रहे हैं, और उनकी वैल्यू, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई है ना, बॉन्ड लूजिंग प्रोपोजिशन है. सो बॉन्ड्स को सोच के बेचना चाहिए हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में, और खरीदना चाहिए जो अच्छे स्टॉक्स हों, क्योंकि करेंसी प्रिंटिंग इतनी की है गवर्नमेंट्स ने यूएस में, जहाँ से मैं हूँ. सो उनको जो जो कंपनीज वीक भी होती है ना, उनको पैसा 0% पे मिल जाता है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ ज़ॉम्बी कंपनीज that are still out there. So इसमें stocks आप सोच समझ के खरीदें, क्योंकि you have to really evaluate the companies. ऐसे नहीं कि मार्केटिंग देख के आप स्टॉक खरीद लो या कुछ, क्योंकि जैसे जैसे करेंसी वीकर होती जाएगी उतने ही ज़्यादा आई थिंक स्कैम्स आएंगे मार्केट में. और जो सूद कह रहे थे अभी कि यूएस का इंटरेस्ट रेट इतना लो क्यों है, उस पे मैं एक कमेंट करूंगा, क्योंकि हमारा डेट टू जीडीपी बहुत हाई है, 130% है अभी. सो अगर हम यूएस में 2% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो हमारा इंटरेस्ट उस डेट पे 750 बिलियन हो जाएगा, जितना हमारा यूएस का मिलिट्री बजट है. सो इसके कारण आई थिंक यूएस विल नॉट रेज रेट्स
much higher than like 2 to 3%. They cannot, even to fight the inflation. Fair point. But I suppose if inflation doesn't come under control, the Fed rate is now 3.1, so might go to 5. I'm very skeptical, but I have my doubts, and I think my doubts will play out right, and the Fed rate will touch 5. In that case, the interest payment for the U.S. government is going to be high. The stock market in US is going to be in doldrums. But having said that, our Indian markets will be very good because our India is great. We don't sell stocks, we sell gold, and our stocks are immune to depression, recession, interest rate, inflation. मेरा भारत महान है, बाकी सब बेईमान है. यही है मेरी स्टोरी. और कोई सवाल भाई साहब? शरद भाई, मैं भी बोलना चाहूँगा. मैं आपकी थियरी के साथ काफ़ी सहमत हूँ, बेरिश व्यू के साथ काफ़ी सहमत हूँ. और उसका रीज़न मेरी बिलीफ ये है कि और काफ़ी इकोनॉमिक बिलीफ भी यही है कि जो हमने 2020 और 21 में बुल मार्केट देखी, वो आर्टिफिशियली पम्प बुल मार्केट थी, क्योंकि फेड ने $9 ट्रिलियन का मनी प्रिंटिंग किया और इंटरेस्ट रेट 0 पे था. अभी जब वो पूरी साइकिल रिवर्स हो रही है, तो फेड ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया लास्ट एफओएमसी में, और आगे भी वो हाइक करने ही वाला है. तो जो नैस्डैक के स्टॉक्स हो गए, ग्रोथ स्टॉक्स हो गए, उनका पी मल्टीपल बहुत एग्जॉर्बिटेंट है. जैसे टेस्ला का पी मल्टीपल मोर देन 1000 है. आपने बाकी सब स्टॉक्स की भी बात करी, पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, राइट. तो वो मीन रिवर्ट तो करेगा ही लॉन्ग टर्म में. पी मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. तो जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं, वो डीसीएफ मॉडल हो गए, ये सब फंडामेंटल मॉडल हो गए. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिस्काउंट रेट भी बढ़ जाता है. तो डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो उसकी पी मल्टीपल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने ही चाहिए. तो उस हिसाब से सारे स्टॉक्स अभी वापस फेयर वैल्यू पे रिवर्ट करने ही चाहिए. और 12,000 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट वो अक्सर करता है. पहले जितने भी निफ्टी के ब्रेकआउट आए हैं, उसने प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट किया ही है. और अगर 38% हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो कुछ 14-15 हज़ार निफ्टी होता है, और 50% रिट्रेसमेंट की बात करें तो वो 12,000 जितना टारगेट आ ही जाता है, राइट. तो उस हिसाब से आई अग्री विद योर व्यू दैट मार्केट इज एक्चुअली बेरिश इन नेचर. और जो फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट है, वो अभी एक बुल मार्केट को सपोर्ट करते ही नहीं है. और एफ जो है वो ओल्ड प्लेयर्स इन द टाउन है, और उनको सब खबर रहती है, अंदर की खबर रहती है क्या अच्छा है क्या बुरा है. वो नेट सेलर्स ही है, हर महीने 40,000 करोड़ की सेलिंग है. और जैसे कि एक और स्पीकर ने बोला कि डम मनी का इनफ्लो अभी सबसे ज़्यादा है. तो they are actually, believing that a roaring bull market is ahead of us, and they are accumulating stocks, and FIs are distributing it. But when they actually come down to short selling the stocks, then there could be a vertical fall. Right now, it's actually consolidating. But when we'll see a breakdown, it would be a vertical fall. Okay, thank you very much. Is there anybody else? Hello, sir. I think it's time to close. Yeah. It's almost 12. It's past 12. So thank you, everybody. Dr. Dhir, Saranjit, Rajiv Malik, Abhijit, Anish, Vishal, Samarth, everybody. See you on Wednesday. Please do come. Yes, Thank sir. you. Definitely. Good night. Good night, sir. Good night, everyone. Good night, sir. Good night, everyone. Good night.